Hello, hello. Hello, check, testing. Welcome to day 8 of Red Premier League Season 2. In the middle, we got the two captains, Mohammad Munazir and Nadeem Dar. This is Manzoor Saab, the match referee. And there is the TV umpire, Shaukat Madi. Time for the toss in the middle. And toss won by Sultan Warriors. They decided to bat first. And this is the beautiful picture coming your way on your screen right now. The news from the center. It's Sultan Warriors batting first against the likes of Spectrum Kings Cricket Club. Overhead and overcast conditions. We shall be back with live action in a while from now.
Assalamu alaikum. Good afternoon and welcome to day 8 of JK Super Cement, a Red Premier League presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. And it's going to be Sultans taking on Spectrum Kings Cricket Club. Toss won by Nadeem Dar, and he decided to bat first. With overcast and overhead conditions, Sultan has decided to bat again here at the center of Bakshi Stadium. Must-win game for Sultan Warriors and as well as for Spectrum Kings. I got Nazir in the comm box. Nazir, how is the Josh? How are you looking forward to today's game? And I know that you were a bit tired yesterday and covered 122 overs in a day. That was a kind of a record. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन सभी व्यूवर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक, जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल और उसके अलावा रेड एफएम जेके यूट्यूब के माध्यम से ये कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता का 13वां मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच। हालांकि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दो प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में वसीम काचरू और उनके साथ आसिम बशीर नजर आ रहे हैं। दोनों अंपायर्स रवि कुमार चौरसिया और उनके साथ बलविंद्र कुमार सोनी। एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता पिछले दो मुकाबले सुल्तान वॉरियर्स ने खेले और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। पहला मुकाबला रॉयल गुडविल से हारे, दूसरा मुकाबला अथवास इंडिया 11 से हारे, तीसरा मुकाबला स्पेक्ट्रम किंग्स के साथ। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुकाबला, एक आकर्षक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इस मुकाबले की महत्वता की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है क्योंकि यहाँ पहली जीत की तलाश सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को और वहीं पे स्पेक्ट्रम किंग्स को भी पहली जीत, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान के लिए जीत अर्जित जरूर करनी होगी स्पेक्ट्रम किंग्स को। फिलहाल शुरुआत होती हुई इस 13वें मुकाबले की सुल्तान के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में। वसीम काचरू स्ट्राइक लेने की तैयारी और अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद मुदस्सिर लेकर के पहला ओवर लेट्स प्ले का निर्णय। राइट आर्म पहली गेंद लेकर के तैयार, हालांकि अपने कदम चूके वापस लौटना पड़ेगा अपने गेंदबाजी मार्ग पर एक खूबसूरत और शानदार आकर्षक वातावरण है और इस वातावरण के चलते उतनी ज़्यादा धूप है नहीं, उतना ज़्यादा तापमान है नहीं, पर ऐसे में अगर देखा जाए तो क्रिकेट की गर्माहट हर सो देखने को मिल रही है क्योंकि सुल्तान अपना तीसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता में जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस, और एक शानदार और बेहतरीन यह मुकाबला रहने वाला है। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें बेहतरीन और शानदार कांटे की टक्कर के मुकाबले और कुछ ऐतिहासिक मुकाबले, वो पहला सुपर ओवर अब तक की इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें जो पिछले दिन हमने देखा था, पिछले मुकाबले में यूनाइटेड इंपोर्ट्स और ग्लोबल रेडू टाइटंस के विरुद्ध। ऐसे में शुरुआत होने जा रही है, देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत देंगे। एक ठोस शुरुआत, हालांकि आक्रामक शैली के दोनों बल्लेबाज हैं, चाहे वो वसीम काचूर की बात करें या उनके साथ आसिम बशीर की बात करें। पिछले मुकाबले में अच्छी शुरुआत दी थी, अच्छा स्टार्ट दिया था, पर 98 तक 3 विकेट गंवाए थे। लेकिन उसके बाद जो अगला सत्र था 10 ओवर का, वहाँ पूरी तरह से टीम जो है वो पेकर गई थी, पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी टीम और मात्र 111 रनों पर सिमट गई थी। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ज़रूर सीख ली होगी, एक नए इरादे के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ यहाँ नज़र ज़रूर आएगी सुल्तान की टीम। और वहीं पे स्पेक्ट्रम किंग्स, हालांकि पिछले 3 मुकाबले ज़रूर आ रहे हैं, पर एक नई शुरुआत, हर दिन नया दिन है, नई शुरुआत, नई सोच, नया आत्मविश्वास लेकर के आपको मुकाबले में उतरना होगा। शुरुआत होने जा रही है इस मैच की, मैच नंबर 13 ऑफ दिस रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। Pause in play. Jahangir John is having a word with skipper Asif Jilani and he's got the match referee alongside. He's going to go other way now. There is a pep talk going on. Mohammad Mudassir is in readiness. It's all set to go. Day 8, match number 13 of Red Premier League Season 2. With a slip in place, beautifully bowled, beautiful delivery to start with, excellent ball, what a delivery, switch in music straight away, look at the lyrics, the tune, and that one just gone past to the bat on that occasion. It's none for none in over number 1. He surprised at Wasim Kachur. Or Wasim Kasser with that beautiful delivery. Take a look again.
Well, he's going to bowl the next one. This time stand tall, trying to punch it away. Just the beginning. And he's got the fresh and the new ball in his hand. Kasur can't keep that one away. Little surprised on that occasion. Back top side. Heavily coordinate. Behind scare on the off. 1, 2, 3 on that portion. With the sir. Oh, look at that shot. Ball, a spectre comes into play straight away. He's going to look for 2. He's going to push for 3rd. No way. He has to contend with 2 here. He has to contend with brace. It's 2 for none in over number 1. Kasur off the mark and underway. So is Sultan Warriors side. 2 for none. As I earlier mentioned, it's day 8 of Red Premier League. JK Super Cement, the title partner, and presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. And that kind of confidence is required by Sultan Warriors at the moment. And their 2 openers need to bat confidently. He's got a man at 3rd man. Dab away. Not a good stop from Azim there. Or it's Azmat Rishi that allowed the 2 batters to be back for the 2nd again. Couple more on that portion. It's 4 for none. This is the first over of match. Toss won by Nadeem Dar, and without any hesitation he decided to bat first. Solid in defense again, right behind that one. Good bounce. Nice carry. Look at that bounce of the surface. It looks okay. And Mudassir is extracting good bounce. Over the past couple of days we have seen that Mudassir, whenever he hits the deck hard, ball is going to climb. And ball takes off. 4 for none. Mudassir once again won't get any run there. It's 1 done. 4 for none. They are batting first. They lost 2 games and they are 2 down straight away, we can say, in this tournament. They lost the first one to Royal Goodwill, and the second one they lost to Athwas India 11 yesterday here at Bakshi Stadium. And today it's their 3rd match, and here they need a victory to keep their hopes alive, to stay in the contention of qualification scenario, to keep their hopes alive that we still have something left in the tournament, we can still qualify. And that's going to be interesting to see, are they going to qualify for the next round? That remains to be seen. Only the time will tell us. Will they go through to the quarterfinals or the Super 8 stage of the tournament? Jahid Rag is going to bowl. He's going to bowl from Southern Pavilion end. And today's game, it started from Northern Pavilion end. Once again, there is a huge cover on offside. Plenty of fielders on offside. He's got 3 men on the on, but a lot of production on the offside. Because these 2 batters, they are good on the offside, and Wasim Kachur can also use that fine leg or the back behind scare on the on to perfection at times. Trying to pull that one. Unable to get hold of that. Kasur is going to walk up to his counterpart in the middle. It's 4 for none. We are in over number 2. 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 4 रन बने हैं आसिम बशीर और वसीम काचरू. ये जोड़ी बीच मैदान में, और वसीम काचरू को आसिम बशीर के साथ लगातार बातचीत करते रहनी होगी, क्योंकि 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं. एक विस्फोटक अंदाज रहता है दोनों बल्लेबाजों का. जाहिद राग अगली गेंदे करके ऑफ स्टंप से बाहर, काफ़ी बाहर थी. यह वाइड का इशारा अंपायर का. 1 रन और खाते में. अतिरिक्त की रन संख्या शुरुआत होती हुई. अतिरिक्त रन संख्या 1, कुल रन संख्या 5 बगैर नुकसान के. दूसरा ओवर स्पेक्ट्रम किंग्स की ओर से. और दोनों बल्लेबाज जो आक्रामक शैली से खेलना पसंद करते हैं, और यहाँ पे वो पावर प्ले काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पहले पावर प्ले में आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा. नॉर्दर्न पवेलियन एंड से जाहिद दराग, आसिम बशीर सामने. एक और अच्छी गेंद, बेहतर गेंद पटने के बाद
उछाल लेती हुई गेंद, हालांकि चूक जरूर हुई आसिम बशीर से, पर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 5 एक विकेट के क्षमा कीजिएगा बगैर नुकसान के, हालांकि विकेट अभी तक मिला नहीं है, पर कोशिश स्पेक्ट्रम किंग्स की एक विकेट प्राप्त करने का शुरुआत में। जाहिर तरह के समय गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छा ओवर अभी तक उनका कटा है। हालांकि एक वाइड गेंद जरूर उन्होंने फेंकी है, पर बल्ले से रन आए नहीं है। यहाँ पे गैप में गई है गेंद और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि काफी तेज दौड़ लगाई थी फील्डर ने, पर गेंद की गति उनसे कहीं तेज थी और ये चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। जाहिद तराक के विरुद्ध आसिम बशीर द्वारा 2 रनों के बीच में से खूबसूरती के साथ उसको प्लेस किया। 4 रन मिलते हुए यहाँ पर आसिम बशीर को, खाता खुला आसिम बशीर को, और सुल्तान का कुल योग इस समय 9 तक पहुंच चुका है। दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के 1.3 आसिम 4, वसीम काचुर ने 4 रन बनाए 6 गेंदों से। इस बार ऑन साइड में एक बार फिर गैप में गई है गेंद, चौका मिलेगा यहाँ पर 4 और खाते में। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक आसिम बशीर का, संतुलित होते हुए इस गेंद को जाहिद तरह के बाद और गति का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जाहिद तरह। अच्छी लेंथ पे ये गेंद जरूर थी, पर आसिफ को अवसर मिला, प्राप्त समय मिला इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में। 4 और खाते में 2 चौके अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। दोहरे अंकों में रन संख्या सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 13। 1.4 ओवर की गेंदबाजी पर थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूरी यहाँ पे बल्लेबाजी में दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि आवश्यकता भी है वापस बॉलर की दिशा में एक अच्छी दिशा और लंबाई के साथ सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी जाहिद तरह को करनी होगी, क्योंकि शुरुआत बेहतर तो फिर अंत बेहतर, पर वो पिछले 1-2 मुकाबले में दिखा नहीं है सुल्तान द्वारा। उनकी बल्लेबाजी दूसरे सत्र में पूरी तरह से फ्लॉप रही है। वो पहला 10 ओवर का सत्र कमाल का रहा पिछले मुकाबले में भी, पर अगले सत्र में 8 विकेट उन्होंने गंवाए थे। यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगता है, आसिम बशीर को वापस लौटना पड़ सकता था। शुरुआत में आपस में बातचीत जरूरी, एक तालमेल का परिचय देना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि ये वो समय है जहां से आप एक बेहतर शुरुआत दे सकते हैं अपनी टीम को। 2 के बाद 13 बगैर नुकसान के आसिम बशीर 8, वसीम काचुर 4 और स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम पहले विकेट की तलाश में। पावर प्ले काफी महत्वपूर्ण, और सुल्तान की अगर हम बात करें तो क्षमता है बल्लेबाजी की। वो शुरुआत के 6 ओवर्स में कई ऐसे अवसरों पर देखा गया कि पावर प्ले में 60, 70, 80 रन जोड़ लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने, और वो एक कला भी है इन 2 बल्लेबाजों के पास, चाहे वो आसिम बशीर हो चाहे वसीम काचुर हो। पर इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। हालांकि दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। मोहम्मद मुदस्सिर एक अनुभवी गेंदबाज, और इस टूर्नामेंट में भले ही उनकी टीम कोई मैच जीत ना पाई हो, पर प्रभावित किया है उनके गेंदबाजों ने, जो युवा उनके गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं। वसीम काचरू बेहतर बल्लेबाज है, तो बात स्पेक्ट्रम किंग्स के उन बल्लेबाजों को जिसमें उमैर ज़हूर, फैजान मीर, फैजुल्ला डार और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी जिन्होंने खासा प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में। तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा जरूर मिलेगी, एक सीख जरूर मिलेगी इस टूर्नामेंट में युवाओं को। सीखने का अवसर मिलेगा जब आप सुल्तान जैसी टीम के साथ मुकाबला करते हैं, दिग्गज खिलाड़ी जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है। कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है इन युवाओं के लिए। फैजुल्ला ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में अब तक के 3 मुकाबलों में, और साथ में उमैर ज़हूर और फैजान मीर, उनके अलावा एक और अन्य खिलाड़ी, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है टूर्नामेंट में। अलग बात है परिणाम उनके हित में नहीं है, वो कोई मुकाबला जीत नहीं पाए। एक सिंगल मिलेगा यहां पर आसिम बशीर और वसीम काचुर को 1 रन और खाते में। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, 14 रन बगैर नुकसान के आसिम बशीर सामने। In search of their first victory, both the teams will have to fight it out here at this beautiful and iconic venue. 14 without loss. Mudassir is bowling really well. He's bowling in that channel, in that area
and that corridor of uncertainty where he's troubling the batters at the moment. They're unable to offer any kind of shot. Take a look again. Beautifully bowled. Coming into the batter, Mohammad Mudassir. You can see that reaction and response from bowler there. Batter just trying to get outside the line of the ball. And he keeps his bat away. That could be tight. Directly needed. Good running between the wickets in the end. Was an easy one to take. They decided to pinch a single, which was full of risk. It was a risky one. 15 without loss, 2.5. Mudassir trying to hold up his line there. He's trying to keep it simple and tight, hitting that corridor and keeping it in that area of vulnerability. But that one, that is sublime. That is a monster. It's gone. No extra cover for a maximum. Shot of high authority. Take a look again. Glorious. Oh, look at that. Sheer class and balance. Inside out he goes. And audacious. Katsur for you. Presented the bat face. Majestic. Mind-blowing. It's 21 without loss after 3 overs. I was talking about Mohammad Mudassir, who bowled 2 overs, none for 12, and couple of balls pitched in that corridor of uncertainty where batter was unable to understand what to do. And at times it's hard to guess which way the ball is going to go. Will it nip back in, or will it leave the batter? Got him in 2 minds. It's 21 for none after 3 overs. You are watching JK Sports Time Facebook, JK Sports Time YouTube. Moreover, it's live on Red FM JK. JK Super Cement, Red Premier League, presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. 21 after 3 overs. Sun is back again. Sun is playing hide and seek at the moment. Sometimes clouds get heavy. Sometimes sun comes out, breaking free. 21 for none after 3 overs. And this has been the story this afternoon here. This has been the story. Sun coming out and hiding behind clouds. 3 overs done. 7 and over coming at the moment for Sultan Warriors. Warriors are 2 down in the tournament. And Spectrum Kings Pampur, their cricket club, they are 3 down already. They lost 3 of the games. This is their 4th one and a must win. Inside the line and worked away nicely. It's gone just wide of that short mid wicket. Position 22 for none. And Asim Bashir moves up to 9 of 8. That brings Wasim on strike. Wasim Katsur. And that shot to extra cover. That was amazing shot of the bat of Katsur. And that shot in itself was an example of high authority and that resilience come class. 22 for none. Good running between the wickets. Soft dab and scamper through. It's gone down towards short cover area, sillier cover area. And the 2 batters scamper through. Good running between the wickets. I think good move. Trying to rotate time and again to get rid of that pressure, which was for a while on their nerves. It was a nervy moment earlier on when Mudassir used it to keep it in that corridor where ball was moving outward, sometimes holding its line, going past an edge. Imtiaz, the spinner operating, the left arm spinner, is given the ball. Flighted one, driven straight. Good looking shot again. Little fumble, but the 2 batters decided to settle for one. Asim and Wasim, the talented pair Sultan's got at the
at the top of the order. And this combination, whenever this pair goes in right direction, the duo are known for setting things ablaze, and they do lay the foundation. And are they in mood of putting runs together today? Let's see, can they pile in excess of 50-60? We have seen over the past couple of days, couple of 100 partnerships between the two openers. The highest one belongs to Hinan Malik and Tajamul Baba. Good shot, scare driven. There is a kind of ricochet. No run taken. 4 gone, 25 for none. They were going 7 and over. Now they're going a shade over 6 and over. That's the beauty of tight over from Imtiaz, who given away just 4 runs. A left arm spinner within the power play and bowling in the right areas, in the right direction. Look at their dugout. Sultan Warriors, there is Tazim Tak. Danish Muzaffar, he's padded up, and that means he's playing today's match. He finds his place in 11. Salman is there, little smile. He looks positive all the time, this young lad. There is Banu, he's also padded up. Who's going to be the next one to walk in? Danish or Banu? Fazul has got the ball. He has got 7 wickets in the tournament so far. He has picked up 7, and out of 7 he has got 5 wicket haul in one of the games. Talking about this tournament, he has picked up 5 wicket haul. That was a fiffer. 25 for none after 4 overs. He's going to bowl from Northern Pavilion end. We have 2 ends this year at Bakshi Stadium, the Southern Pavilion end and the Northern Pavilion end. The bright sunshine on, pretty on at the moment. That little moisture will dry up sooner or later. If it dry up sooner, that will help the 2 batters, but the spinners will come into equation. 25 for none after 4 overs. We are in over number 5. Fazullah to continue. Fazullah got the ball in his hand. Waseem on to 13. Getting a kind of start. Now need to convert this one into a substantial one. He has to take care of his nerves here. Look at that shot again. Presented the bat face. Open at the bat face. Just over the man at cover and into the extra cover boundary for 4. Once again, superb timing behind that shot. Look at that shot. Oh, that is the beauty of Waseem Kasur. He's so good there. Whenever you provide that kind of half tracker or the pitched one, and you lure him into that kind of a shot, and he's going to present the bat face, and he's going to oblige. It's honest on batter like Waseem Kasur to dispatch it. But there was a nice footwork. He's batting with that angle stance. At times it's so difficult to adjust. But he has got that adjustment right. 29 for none. Oh, that one. Is he in danger? That's aerial. That's uppish. There is a man who comes from wide-ish long off to stop the ball. And the 2 batters chip in with the brace. Good running again. Restrictions are on. He plays that one in the gap and keeps it straight down the track, down towards a long off area in front of side screen area. This time trying to sweep the ball. There was a little shout for LBW and is turned down. So no problem at all on that occasion. He gets away with that one. As we are in over number 5. Responsibility on his shoulders. Asim has to play his part today. He batted really well yesterday against Athwas India 11. And that was a wonderful knock. That was swashbuckling one. Fazullah is bowling really well. He's keeping things tight here. And Waseem Kasur feels little cagey. He's picked up 6. And what he's looking for, that really surprised me. That one, it's gone over the man at backward a point. Gonna be runs again. Bit lucky there. Man at backward a point. Azmat Rishi is unable to plug that. He's telling his partner it wasn't easy to bring that one down as it flown.
over my head. Take a look again. It was a deliberate one. He wanted to go over the infield. Just past the man at backward a point. He gets 4 for that. He gets good result there. And with that boundary, addition to the tally. Another good shot. Fearless in approach. At times, he's looked fearless, gutsy. And you got to be brave. And within the power play, you have to take chances when required. And it's 35 for none. Now there is a change in the field setup. I think that's a good move because he loves to go up and over. There is a man at extra cover boundary. He has decided to sweep the ball and is beaten completely. We're done with fifth one here. 35 for none. They were going 6.25 in over number 4. Now they change it a little bit. Now it's again shade over 10 and over. 7 and over, sorry. Shade over 7 and over. And Fazullah 1 over, none for 10. His very first over today yielded 10. The Yash Garg is the highest wicket taker of the tournament with 15. He's leading that chart. He's right on top with 14 wickets. Then the second one, there is Roof Bashir with 10 wickets. 7 each, 7 apiece for Fazullah and other bowler. 35 for none after 5 overs. Sultan Warriors trying to start on a good note, on a positive note. The two batters look positive. Long way to go. There is a man at mid-on. Should be taken. Soft dismissal it is. Asim Bashir got to go. Can't keep it down there. He's surprised once again. He can't believe, but got to go. The first blood is drawn. It's Imtiaz who draws the first blood and sends him packing. Asim can't believe, a kind of a brand fade. Watch that again. Oh, it holds us up a bit. And then there was extra bounce. He was early into the shot without knowing what to be done. It goes straight. It balloons up in the air. And there is a man at mid-on. Azmat Rashid as well. Good catch in a kind of hurdle. Something that's going to inspire these young lads. They needed an opening. And here is that. It's Imtiaz, none other than Imtiaz, who provided them that much needed breakthrough. And the opening partnership is broken here. It's Asim on his way back to Pavilion. And Sultan Warriors are 35 for 1. आसिम बशीर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं. 35 पे पहला विकेट सुल्तान ने गंवाया. और जो बात कर रहे थे कि अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, अच्छी शुरुआत देनी होगी, तो 35 रनों की एक शुरुआत कहना चाहिए अच्छी थी. पर इस पार्टनरशिप को और बेहतर कर सकते थे, और लंबा खींच सकते थे दोनों बल्लेबाज. पर यहाँ आसिम बशीर अपना विकेट गंवा बैठे. वसीम काचुर अभी नाबाद है. 6.77 प्रति ओवर के हिसाब से. दानिश मुजफ्फर जो पिछले मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे, और प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिली थी, पर इस मैच में अनुभवी खिलाड़ी दानिश मुजफ्फर का इस्तेमाल किया गया है. 35 पे 1, 5.1 ओवर की गेंदबाजी. इम्तियाज को मिलने वाली यह पहली सफलता अपने दूसरे ही ओवर में मात्र 4 रन देकर के अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है. और अब जाकर के तेज धूप मैदान में बख्शी स्टेडियम श्रीनगर. JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. इम्तियाज अपील जोरदार, पर अंपायर रवि ने उसको स्वीकार नहीं किया. पैड पे टकराई जरूर थी नीचे रहती हुई गेंद. इम्तियाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले आसिम बशीर को चलता किया, और अब दानिश मुजफ्फर के वक्त पहली गेंद पर थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास, और ज़्यादा गति का इस्तेमाल नहीं करते. अच्छी गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रही है. ऑन साइड में खेल करके रन पूरा करने का प्रयास, और सफलतापूर्वक रन पूरा किया. दानिश मुजफ्फर ने खाता खोल लिया. वसीम काचुर 23 पे हैं. 36 पे 1, 5.3 ओवर की गेंदबाजी. 6 ओवर समय पावर प्ले का ये चल रहा है, और ऐसे में स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम को 1 विकेट जरूर मिला है. आत्मविश्वास जरूर जगह होगा वहां पर, बड़ा होगा वहां पर टीम स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब का. इस बार बैकफुट पर जाकर के खूबसूरती के साथ खेला जरूर.
हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात जब तक वे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र से गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था एक सिंगल लेने का। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर, और वसीम काचरू और उनके साथ दानिश मुजफ्फर अभी अभी आए हैं आसिम बशीर के स्थान पर। जानते हैं कि इन परिस्थिति में आपको कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे। दानिश मुजफ्फर और वसीम काचरू को 24 पे 19 गेंदों से वसीम काचरू, दानिश 1 पे 2 गेंदों से 37 एक विकेट पे। छठा ओवर, कुल मिलाकर ये 13वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। एक और सिंगल मिल जाएगा, जाहिद तैनात हैं वहां लॉन्ग ऑफ पे, और जब तक वे गेंद को फील्ड करते एक और सिंगल मिलेगा। लगातार सिंगल्स लेना एक अच्छी उपलब्धि इस समय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जितना आप विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाएंगे, एक एक रन से इस पारी को आगे चलाएंगे, एक को 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा विपक्ष पे दबाव जरूर आएगा, पर रन गति पे अंकुश लगाना अवश्य इस समय गेंदबाजों के लिए। एक अच्छा मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला वर्सेस स्पेक्ट्रम्स किंग्स के खिलाफ। वसीम काचूर सामने, उनका प्रिय स्ट्रोक, गैप में गई है गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ वसीम काचूर को। 28 पर पहुंच गए 20 गेंदों से। और वसीम काचूर की पारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, उनका योगदान बेहतर रहता है, और वो टिक करके खेलें तो फिर सुल्तान एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकती है। और दूसरे छोर से जो साथी खिलाड़ी, उन्हें समर्थन देना होगा, सहयोग करना होगा, अपना योगदान देना होगा, वो दायित्व निभाना होगा। हालांकि पिछले मुकाबले में भी हमने देखा सुल्तान ने पहले 10 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की, ज़्यादा विकेट नहीं खोए, और एक समय में 98 पे 2 विकेट खोए थे, फिर 111 तक टीम जो है वो मात्र पहुंच पाई, ऑल आउट हो गई थी 17वें ओवर में। 112 रनों का लक्ष्य रहा अथवास इंडिया के सामने, और उन्हें बेहतर तरीके से उसको चेज भी कर लिया 12 ओवर में। फिर यहां 6 ओवर में 42 बने हैं, 1 विकेट खोया वसीम काचूर। 28-20 गेंदों से दानिश मुजफ्फर 2। दानिश बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, इस तीसरे मुकाबले में आज उन्हें जगह मिली है इस टीम में, और देखना होगा दानिश मुजफ्फर किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, अपने इस स्थान को पक्का कर पाएंगे इस टीम में। वसीम 28, दानिश मुजफ्फर 2, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 42 एक विकेट पे। 7वें की शुरुआत फैजुल्ला डार ने इससे पूर्व 1 ओवर की गेंदबाजी की है, और अपने पहले ओवर में उन्होंने 10 रन जरूर खर्चे हैं, थोड़ा प्रभावित आज कर नहीं पाए बल्लेबाजों को। 42 पे 1, 6 ओवर की गेंदबाजी, 7वें की शुरुआत होने जा रही है। दानिश मुजफ्फर होंगे सामने, फैजुल्ला डार का दूसरा ओवर, और एक विकेट की तलाश यहां पर, और क्या फैजुल्ला डार एक विकेट दिला पाएंगे अपनी टीम को। एक बेहतरीन गेंदबाज है, उभरते हुए गेंदबाज इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में 7 विकेट अभी तक वो प्राप्त कर चुके हैं। थैंक यू मुनव्वर भाई ये जानकारी देने के लिए। इस पर हल्के हाथों के साथ इसको खेला, ऑफ साइड में एक सिंगल, 1 रन और खाते में। हाँ, कभी कभार इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपको एक स्टैटिस्टिशियन का रोल भी प्ले करना पड़ता है, और वो रोल हमेशा से आप प्ले करते आए। 43 पे 1, इस 7वां ओवर, और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को एक बेहतर शुरुआत चाहिए वसीम काचरू के लिए, और बैक ऊपर जा करके खेलने का प्रयास था, थोड़ा एकाग्रता भंग जरूर हुई थी, वो बाहरी किनारा जरूर था, वो तिरछे आड़े बल्ले के साथ भाग्य ने साथ दिया। और कभी कभार ये मानसिकता जब भंग हो जाती है बल्लेबाज की, तो फिर आपके विरुद्ध इस प्रकार के व्यवहार देखने को मिलते हैं, क्योंकि सुल्तान की टीम को एक बेहतर शुरुआत चाहिए। एक विकेट वो गंवा चुके हैं, शुरुआत में आसिम बशीर का विकेट खोया, तो फिर यहां एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, क्योंकि वो पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण है, उसका महत्व है इस मैच में। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग 2025 सेकंड एडिशन। यहां गैप में गई है गेंद, फील्डर पीछे हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के अंदर जब तक वह गेंद को रोक लेते, थ्रो करते समय दोनों बल्लेबाजों के पास कुछ और रन लेने का। 13वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का, सुल्तान का तीसरा मुकाबला। 2 मुकाबले इससे पूर्व खेले हैं और दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। स्पेक्ट्रम ने 3 मुकाबले खेले हैं और उनका ये आखिरी लीग मुकाबला है इस टूर्नामेंट में, और तीनों मुकाबलों में हार का सामना, जीत के साथ वो अंत करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में। बेहतर स्ट्रोक है सामने की ओर, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिल जाएगा यहां पर, 1 रन और खाते में जोड़ लिया।
और ये बेहतर रणनीति है, क्योंकि आप जब अब इस प्रकार की स्ट्रेटजी से बल्लेबाजी करते हैं, एक को 2 में कन्वर्ट करते हैं और सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, खराब गेंद को सही नसीहत देते हैं, तो आपकी जो मानसिकता है वो क्लियर रहती है, आप पे किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। तो वो कोशिश अभी तक की है इन दो बल्लेबाजों ने। 48 पे 1, 6.4, 48। 7वां ओवर 2 के 2 खाना बाकी। फैजुल्ला डार 1.4 ओवर 16 रन। बाएं हाथ की गेंदबाज नजदीकी स्लिप तैनात। थोड़ा शांत जरूर रखा है वसीम काचुर को अब तक इस मैच में। कुछ स्ट्रोक उन्होंने जरूर खेले हैं, पर यहां थोड़ा शांत जरूर है, क्योंकि विकेट का महत्व जानते हैं, मुकाबले का महत्व जानते हैं। ऐसे में वसीम काचरू कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने का प्रयास जरूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यहां से एक और विकेट गवाया तो एक अतिरिक्त दबाव जरूर आएगा टीम पे। 49 पे 1, 6.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी। 7वां ओवर। कोशिश जरूर होगी यहां पर सुल्तान की एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया जाए स्पेक्ट्रम के विरुद्ध। उस समय भी है, मौका भी है। वसीम काचरू बेहतर बल्लेबाजी करते हैं, ऑन साइड में खेल करके दौड़ पड़े एक सिंगल के लिए। दूसरे की मांग थी पर वापस भेजा दानिश मुजफ्फर को। अंतिम गेंद पर सिंगल। 7 समाप्त और 7 ओवर में 50 रन। सुल्तान की अगर बात करें, रन गति बहुत बढ़िया, विकेट मात्र एक ही खोया, पर यहां से आगे का जो सत्र रहने वाला है 7 से 14 ओवर तक, वो काफी महत्वपूर्ण। और वहां आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे ये परीक्षा रहने वाली, क्योंकि दूसरा सत्र पिछले 1-2 मुकाबले में देखा गया है, उस सत्र में आप लगातार विकेट गंवाते चले गए हैं, पिछले मुकाबले में, उससे पूर्व मुकाबले में भी। पर यहाँ उस चीज पे कहीं ना कहीं कार्य करना होगा, क्योंकि अगला सत्र जो काफी महत्वपूर्ण, आप 10 ओवर में 1-2 विकेट गंवाते हैं, अगले 10 ओवर में आपके पास 8 विकेट सुरक्षित, तो बेहतर तरीके से फिनिश करना होगा। अगर आप 200 के आसपास ले जाएंगे एक अच्छा लक्ष्य इस विकेट पे। हालांकि इस विकेट पे दूसरी पारी में हमने देखा 190 चेज हुआ है, 169 चेज हुआ है, और इस विकेट पे रन बने जरूर हैं। ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। वो शुरुआत के 2-3 मुकाबले वहां थोड़ा सा विकेट जो है मुश्किल था बल्लेबाजी के लिए, फिर समय के साथ साथ विकेट और भी बेहतर होता चला जाए। फिलहाल 7 के बाद 51 विकेट पे। It took 7 hours to get there, 50 on the board. Playing totally different in today's game. Yesterday, they were 98 around that after the completion of 11th over, but today it's a different story altogether. 50 for 1. Wasim Kasur with that straight shot. He's going to pick one here. It's 51 for 1. And as you rightly mentioned, that they need to keep wickets intact from over number 7 till over number 14. This is an area, this is the passage where you have to keep wickets intact. Then you can give the license to the middle and down the order batters to use those overs cautiously, and they can go for the full Monty, and whatever they want to do, they will be having license in their hand to go for the full Monty and to go for the kill. And look, he wanted the second, and he's going to take that. These two lads, they're so quick between the wickets. They're running between the wickets. It's another key aspect here, and it's going to be pivotal. It's 53 for 1. We are into the 8th over here. Imtiaz, he's looked good in his third over, 1 for 14. And Danish Muzaffar, finally he gets his place, and he's back into the 11. He was rested and benched yesterday, and that cost them heavily. But Fazullah has been an impactful player in the tournament. The way he bowled yesterday, and once again here, the way he's bowling, he's keeping things tight. Impressive left arm spinner, another finding, another special character. And owners need to work on this lad. We saw that Umar Zuhu, it's by virtue of the event and JK Sports Time that we came across a couple of big names in the valley who are still young but are going to be the future prospect. Little Ariel and Apish. Wasim Kasur, he's trying to break free, but Find is the man at long off. It's gone on the bounce, so no problem at all. He's going to survive that scare. 55. We're talking about Fazullah and Umar Zuhur, the two lads playing for the same club, Spectrum Kings. That's the difference between Katsur and Danish Muzaffar. Katsur, he is a typical batter. He's a dashing opener. But Danish Muzaffar, look this lad. He's going to keep the ball down. He's going to keep it on the turf. It rolls off the turf. 56 for 1. 8th over we are in. Oh, look at that one. Slog sweep. There is a man. He dropped. Should have been taken. He parried that one into the fence. What you have done, Azmat Rishi. What you have done. It's going to be a big, big blunder and a mistake. Should have been taken. You can't drop batter like Kasur on that occasion. Should have been taken. It is going to be a big, big lapse. Azmat Rishi, the culprit there. He parried it into the fence in the end. It is going to be power
and ferocity behind each and every shot. We know that Wasim Kasur is generating pace, but that should have been taken. Should have been held by the man there, but unable to hold on to the ball. And he leaked a 6 there. It's 62 for 1 after 8 overs. And once Kasur get his eyes in, it won't be easy to stop Kasur. He's going to go after the bowlers. He will use his technique and those tactics of high level. And within the Powerplay, we have seen a couple of shots of the bat of Kasur. The one that where I used the audacious, that gone onto the tent. They're on that central tunnel area. The amenity block 3 and 4. In between amenity 3 and amenity block 4. And that was glorious shot. And the next one, that square driven. The one that was a kind of a lap over backward a point. That was another glorious and gorgeous shot. Danish Muzaffar, he has that ability to keep things tight and he can stick to basics. He's going to make other batters bat around him. He's going to provide that kind of stability that we're missing in the last game. He can stabilize an inning. It's over number 9 we are in. There is a slip in place. Asif Jilani is in slip cordon. Faizullah to continue. Look how he is transferring his weight from front foot to the back foot. How he's getting in position. The adjustment that is so nice from batter Danish Muzaffar. Keeps it away to point area. Picks up a single. That will bring Kasur back on strike into the 40s. Now on to 42. And today he's got a start. Now he need to convert this one. The conversion is missing. He has to make this one big. Make it large. That is a good looking shot again. Deep down the crease. Faizullah in today's game 2.2. None for 20. He has picked up 7 wickets. The highest wicket taker of the tournament is Yash Garg, who wreaked havoc with the ball. Twice he picked up 6 wickets in an innings. Little uppish, little area. No problem there. He survives. The man around that a backward point area. But as well stops the ball. Driven straight, not going for runs again. The beauty of this lad, he bowled within the Powerplay. Now he's got another over. And it's over number 9 overall. He's keeping things tight. He isn't allowing batters to break free. And that's the only thing you have to do against the likes of Faizullah. When you're unable to get to the pitch of the ball, you have to dab it away. You need to fill in the blanks formula. Go for 1s and 2s and place the ball. Just keep it on the turf. Let the ball roll past and scamper through. Last ball of over number 9. And look at that shot again. Improvise. And that's the beauty of Kasur. There is a fumble. He has made mess of that. Gonna be runs again. Gonna be 4. And what can Faizullah do now? He did really well, keeping things tight. But Kasur is showing that hunger for runs. Look at that shot. A lap shot comes into play again. He was trying to go with that paddle sweep. And to some extent, we can also call it a kind of paddle. But does well. Once again, it's 65. It's 69 for 1 after 9 overs. Another even flow comes to an end. And Kasur is going to make it big and large with the passage of time. If he stays there, then Sultans can hope that we're going to finish around 150, 160. Who knows, they can think of more than that. But this lad has to bat through the innings. On the other side, Spectrum Kings, they need to understand, they need to get rid of the partnership, because partnership will keep bowlers away and batters will reap that harvest. And once they're able to rotate and runs keep coming thick and fast, it's going to build a huge amount of pressure. It will be counting and mounting. On the other side, batters will have their chance and they will try to bat freely. And there is going to be that kind of a freedom where they can excel and flourish. 9 समाप्त होना पे एक वसीम काचूर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 47 पे दानिश मुजफ्फर उनका सहयोग. दूसरे छोर से उनको समर्थन मिल रहा है. 10 रन बनाए 12 गेंदों से. 11 ओवर का खेल बचा है. कोशिश 150 से अधिकतम पर स्पेक्ट्रम किंग्स के पास, और कुछ कैच जरूर छोड़े हैं वहां पर टीम ने. अगर जिक्र करें तो 1-2 ऐसे अवसर आए हैं जहां पर आप विकेट प्राप्त कर सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 69 विकेट पे 9 समाप्त 10वें की शुरुआत. यह 13वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का. जेके सुपर सीमेंट
Red Premier League second edition 2025 presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम बल्लेबाजी करती हुई पहली पारी के आधार पर टॉस जीतने के बाद इस 13वें मुकाबले में स्पेक्ट्रम किंग्स के विरुद्ध पहली जीत की तलाश दोनों टीमों को, चाहे वो स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब हो या फिर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। अजमत रेशी का इस्तेमाल, नए गेंदबाज का चयन। पहली गेंद दानिश मुजफ्फर के लिए, ओ भाई पास में दौड़ पड़े थे रन के लिए। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, कुछ जल्दबाजी में जरूर दिखे इस गेंद पे दानिश मुजफ्फर। हालांकि जानते हैं हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है। अभी भी 11 ओवर का खेल शेष है, 10.5 ओवर का खेल अभी भी शेष। 69 रन बने हैं 9.1 में। एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई है आसिम बशीर के आउट होने के बाद दानिश मुजफ्फर, वसीम काचुर ने। और कुछ बेहतरीन स्ट्रोक भी खेले हैं वसीम काचुर ने। 47 पे नवादे, दानिश सामने, अच्छा स्ट्रोक। गेंद सीधे फील्डर के पास, 1 रन और इम्तियाज ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन संख्या में वृद्धि 70 पे 1, 9.2 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर इस पहली पारी का। 70 रन बना लिए हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम ने। 10वें ओवर की गेंदबाजी, आखिरी 10 ओवर जो होंगे दूसरे सत्र के, वो काफी महत्वपूर्ण। पर पहले सत्र की अगर हम बात करें तो अच्छा अब तक ये सत्र चला है, क्योंकि 7.50 इस समय करंट रन रेट 70 पे 1। एक और अच्छा स्ट्रोक पर लॉन्ग और पीछे है तैनात। बाउंड्री लाइन से आकर के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते समय 1 रन लेने का, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए। अच्छी रणनीति, विकेट आपके हाथ में यार। 13-14 ओवर तक अगर आप इसी प्रकार की बल्लेबाजी कर लेते हैं रणनीति के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से विकेट को सुरक्षित रखते हैं, तो आखिरी 4-5 ओवर्स में आप 10 रन, 11 रन, इवन के 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना सकते हैं। वो क्षमता है बल्लेबाजों में, क्योंकि आज ज़ुहूर जोलो का भी संभवतः चयन हुआ है टीम में। और दानिश मुजफ्फर टीम का हिस्सा है। वसीम काचुर, हालांकि आसिम बशीर आउट होकर मैदान से बाहर चले गए, और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर और खिलाड़ी हैं। तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन इस मैच में लेकर के उतरी है सुल्तान वॉरियर्स, और जानते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है। मैं समझता हूँ इस मुकाबले पर नजरें जरूर होंगी दोनों टीमों की, पर सुल्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर देखा जाए तो अपने पिछले 3 मुकाबले गंवा चुकी टीम स्पेक्ट्रम किंग्स, और मान सम्मान के लिए ज़रूरी है इस मैच को जीतना। ये काफ़ी ऊपर हवा में गई है, विकेट कीपर आ रहे हैं, उसके साथ ही खिलाड़ी भी आ रहे हैं, पर गेंदबाज ने कैच तो लपक लिया और वसीम काचुर की पारी हो गई समाप्त। 48 बनाए, 31 गेंदों का सामना किया। दूसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाना होगा। 72 पे दूसरा विकेट 9.5 के बाद। लगातार वो कुछ अतिरिक्त जोखिम लेकर के स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। 48 बनाए 30 गेंदों से, 4 चौके 2 छक्के, 160 का स्ट्राइक रेट। 30 गेंदों से ये 48 रन आए। और सफलता मिली यहां अजमत रेशी को। काफी ऊपर गेंद गई हवा में, नीचे खिलाड़ी संतुलित हुए और उन्होंने कैच लपक लिया। एक बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई यहाँ स्पेक्ट्रम किंग्स को। और अब दोनों ओपनर्स वापस लौट चुके हैं, पहले आसिम बशीर और अब वसीम काचुर। 48 की पारी खेलने के बाद इस एंगल से देख लीजिए, काफी ऊपर हवा में गई थी गेंद, ठीक तरीके से स्ट्रोक को टाइम भी नहीं कर पाए थे। गति का भी ज्यादा परिवर्तन नहीं किया था वहां गेंदबाज ने, और विकेट गंवाया। अब जाकर के 9.5 के बाद 72 पे 2, दानिश मुजफ्फर 12 पे। और नए बल्लेबाज अब मैदान की ओर देखना होगा। दानिश के साथ किस बल्लेबाज का चयन किया गया है। कहानी एक बार फिर, पहले 10 ओवर में आपने 2 अथवा 3 विकेट। और पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें, पूले रॉयल गुडविल 3 मुकाबले, तीनों में जीत, और 6 अंक है उनके, 1.323 उनका नेट रन रेट है। अथवास के 3 मुकाबलों में 2 जीत 1 हार और 4 पॉइंट्स उनके हैं। सुपर स्टार ने 1 मुकाबला खेला, उसमें 2 अंक वो जीता है। सुल्तान वॉरियर्स ने 2 जीते हैं, इससे पूर्व दोनों हारे हैं। अभी अंक तालिका प्रारंभ करनी है। पूल बी की अगर हम बात करें, और सबसे न्यूनतम ताली पे स्पेक्ट्रम किंग्स है, 3 मुकाबले उन्होंने हारे हैं। पूल बी में यूनाइटेड इम्पोर्ट्स की टीम सर्वश्रेष्ठ 6 अंक,
रियल सुल्तान्स 2 अंक, अल समद क्रिकेट क्लब 2 अंक, हिलवीव राजौरी 2 अंक और ग्लोबल डडू टाइटंस ने 2 मैच खेले, दोनों में हार, उन्हें अंक तालिका प्रारंभ करनी है। और लीडिंग विकेट टेकर्स की अगर हम बात करें, 14 विकेट यशगर के, 10 विकेट रूप बशीर के, 7 विकेट आबिद मुश्ताक के और 7 विकेट फैजुल्ला डार के। और वहीं पे लीडिंग रन स्कोरर्स की बात करें, 166 रन साहिल शबी यूनाइटेड इंपोर्ट्स, 125 तजमुल बाबा द रियल सुल्तान समरभोग, 125 नासिर कुमार गुडविल क्रिकेट क्लब। और ये अब तक की जो है अंक तालिका है और सबसे उच्चतम स्कोरर इस प्रतियोगिता के पॉइंट्स टेबल वगैरह जो हमने अब तक पहुंचाया। तो ऐसे में अगर हम बात करें, सुल्तान ने 2 मुकाबले खेले, दोनों में हार, अंक तालिका प्रारंभ कर दी। स्पेक्ट्रम ने 3 मुकाबले खेले, इस पूल की अगर हम बात करें तो तीनों में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ 2 अंक प्राप्त करने हैं, या फिर वो स्पेक्ट्रम के खाते में अथवा सुल्तान के खाते में। आखिरी गेंद हो गई और भानु पोनिया एक बार फिर नए बल्लेबाज, पिछले 2 मुकाबलों में उतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन एक मुकाबले में कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था, पर दूसरे मुकाबले में वो योगदान उनका रहा नहीं। और आज तीसरे मुकाबले में एक बार फिर उनको अवसर मिला है, तो देखना होगा ये महत्वपूर्ण मुकाबला और जहाँ पे आपका प्रदर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, किस प्रकार से आप इन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करेंगे। 9.5 72 पे 2 भानु पोनिया सामने अजमत रेशी की। This is over number 10 we are in. Azmat Rishi. Change wicket for captain. As he was given the ball and he said that I'm here, I will deliver my level best, getting rid of the sad batter Wasim Kazu. That is an achievement, and he achieved with the rare feat, removed him on 48 of 30 balls, and he was just trying to gear up, he was trying to take that game away. 2 for 72. The very first ball of the to the newcomer, that's gone over mid-off into the fence at long off for 4. And Banu opens his account with a boundary, keeping mid-off up, giving this lad a space to find out a boundary. Look at that, fuller one, over pitch to one, easy pickings, driven straight. No problem there. It's a safe shot and a good one to play. He opened his account on a very first ball. Look at that shot straight away. He knew that there is a man up inside 30 yard at mid-off, and he just cleared that man at mid-off, gets 4 for that. Good way to start his innings with a boundary, 76 for 2. We are into the 11th over. Who will operate? It's going to be left arm spinner Fazullah, who's picked up 7 wickets. And this is their 4th game. The last league round robin game for Spectrum Kings Cricket Club. And it's a must win. It's a do or die for Spectrum Kings. And Sultans, they also need a win to bounce back. They lost 2 on the trot. He's beaten completely on that occasion. Started the fresh over on a good note. Straight away, he gets beaten. No slip in place with backward a point and fly slip in place. For the short third, he can call it now because he's a bit wide there. Scared on the on. He's going to look for one, and that will bring Banu on strike. They're going at the rate of 7.48 an over. Sun is shining brightly over the center. There was cloud cover earlier on. When we arrived here at the center, it was overcast and overhead. Now, sun is shining brightly. Cloud is cleared up. It's all clear, is fine here. Driven straight. Just wide up the man. Are they going to look for the 2? Look what's going on. This one you call the communication gap. And you can't risk your wicket here. You're already 2 down and you lost the wicket recently in form of Wasim Kasu. Muzaffar and his partner Banu need to understand. The next one worked away nicely. Flick of the wrist. Bowling unit. Young pack as far as Spectrum Kings are concerned. Bringing in some experience, or the experienced lads in form of Mudassir Molvi and his yesterday they used the likes of Ovasha. Rock back, and this lad, he's so wristy and he's got those techniques, and the technicality is there, and this lad is so sound when it comes to the batting. Banu on to 6 of 3.
Sultans are 80 for 2. That is a good looking shot. He was eyeing to go over extra cover, but his bat rolled a bit. The one we saw the bat of Wasim Katsu, that was proper inside out shot. And Danish is also capable. He can also go over the man at cover to find that extra cover fence. There are some of the areas where there are big gaps available. You got to beat the man. You're going to get more than one, and sometimes you will get a boundary there. 11 overs, 81 with 2 wickets down. Both openers gone back to hut. And Zurzolo is padded up. Captain is also padded up. Interesting thing, who's going to come at number 5? Who's going to walk in next? Look at their pack. Looks okay, looks leave it at the moment. And it is JK Super Seamen. Red Premier League Season 2. Presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Banai Mazboot Kashmir. Let's build it together. 2 for 81. After 11 overs. With 9 overs to come. In the next 9 overs. In next 9 overs. Let's find it out how Sultans will study the ship and look for scoring runs here. They need to score in excess of 160. That one, it dropped a little short of fielder there. And Gilani is not showing that aggression there. Fielders need to be aggressive at times. Agility is required. Got to be quick on the field. Showing that kind of lazy approach. The laziness that allowed the second run. Unit need to put brakes on the scoring rate. And make batters toil hard. Let them struggle for each and every run. But that's a quality flick shot. Down to the backward of Skellig boundary for a maximum. 6 more. Azmat Rishi. A tall, lanky bowler. Oh, look at that one. It was a hit me delivery. Oh, pitch to one down the leg side. Easy pickings. Watch that again. Gone big. Easy pickings. Good shot. Nicely done. Wristy. And flick of the wrist yielded half a dozen for Sultan Warriors. Important blow. Big shot. 2 for 89. 8 of the over already. With 4 balls to come. Looks so strong there. Again worked away nicely. Square on the on. 90 on the board. And this over Azmat Rishi. He's looked bit off colour. All of a sudden with that 6. 1 big shot or 2 big shots. They changed the complexion of an over. It's already 9 of 3 balls here. Pano on strike. Trying to guide it away. Is beaten completely. And it's a win-win situation for bowler. He chipped in with a dot. That one gone past to the bat. There was pace behind the ball. Bano tried to use that pace to run it down to the third man. Didn't succeed. A dot delivery is like gold dust. Works it away onto the on. Call is for 2. Imtiaz is so quick. He comes quickly onto the ball. Just a single. 91 for 2. Bright sunshine. Gentle breeze. Colorful flags waving around the center. It's day 8 of JK Super Cement Red Premier League Season 2. Flicked away nicely. In the gap. Gonna be runs. Using that pace of the bowler to perfection. And Danish Muzaffar. Gandarbal based boy is trying to take bowler on, but that is a quality shot indeed. No doubt about that. Take a look again. Oh, wonderful shot. Nice stance. Gonna be a boundary for Sultans and Danish Muzaffar. And that will
add 4 more runs to his individual tally. Look at that shot again. Eyes on the ball till the very last moment. And this over gone big from Azmat Rishi. Looks tied at the moment. It's 2 overs 1 for 21, 95 for 2 after 12. Yesterday they were 98 for 3, I think, in 11th over. Then things changed drastically, completely. And one can't believe what happened. And those who were physically here and others who were watching us live, even they were surprised at what's going on, how they lost the momentum. And that's why cricket is changing its colors, and it's why it's called the game of glorious uncertainties. You can't say anything until the last ball is non-bowled, and you don't know what's going to come your way, our way on the very next ball, as it's unpredictable. Change in the bowling. Captain is having some of the options here. He will try to go with different options. He's going to try with different options to find some luck there. Is this lad going to find some luck with the ball? Can he find a breakthrough here? What he will do now? There is a little adjustment in the field going on at the moment. 13th over. It's Jihad Magre to bowl. Magre has his own name. He's a famous name. Jihad Magre, 2 for 95 after 12. And Magre will bowl against the likes of Banu, who's having tons of experience. And that portion, even yesterday I saw, these hoardings were put down even yesterday. And there is going to be the kind of reflection. And to avoid that, sometimes batters and the bowlers lose a kind of way and that sight. And they don't want to get distracted. They don't want that kind of distraction. First ball of Magre's spell is worked away nicely, gently. 2 for 96. Resurrection. And in the meantime, they need to hit a boundary. Each over they need one big hit to keep that score, to keep that 180, 170, beyond that in mind. एक और परिवर्तन जियाद मागरे को लेकर के आए हैं. गेंद की पिच तक पहुंचते हुए खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेला. मिड विकेट क्षेत्र से गेंद को फील्ड तो किया गया, पर रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास. सिंगल एक और खाते में 97 पे 2. बानो और दानिश मुजफ्फर बीच मैदान में. मागरे की ये खराब गेंद लेग स्टंप पर खूबसूरती के साथ खेला. फील्डर तैनात है, एक रन जरूर मिल जाएगा बानो और दानिश मुजफ्फर को. 29 पे दानिश मुजफ्फर, 24 गेंदों से बानो 9 पे 7 गेंदें उन्होंने खेली. 7.84 ये वर्तमान रन गति है. 98 पे 2, 12.3 के बाद एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए थे. पटने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वाइडिश लॉन्ग ऑन क्षेत्र से दोनों बल्लेबाजों के पास समय था. और इन 2 रनों के साथ 100 रन पूरे होते हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के 2 विकेट पे. 12.4 के बाद 100. दानिश 31 सामने. और बेहतरीन पारी खेली है दानिश ने. बानो पोनिया उनका सहयोग तरीके से दे रहे हैं. 7 से 9 इस ओवर में 4 गेंदों से 4 सिंगल जियाद मागरे के. अच्छा ओवर अभी तक जियाद मागरे का. अपील की जा रही है, थोड़ा शफल करके ऑफ स्टंप की ओर चले आए थे. एक सिंगल मिल जाएगा और 1 रन. और पिछले 3 गेंदों से 3 सिंगल और फिर एक डबल, और अब जाकर के एक बाई के रूप में. तो कुल मिलाकर 6 रन 5 गेंदों से इस ओवर में. 101 पे 2. ये बड़ा स्ट्रोक है और ये स्टैंड्स में काफी दूर गई है गेंद, मैदान से बाहर. 6 मिलते हुए इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि. ओवर की अंतिम गेंद पर बानों के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत हवाई यात्रा पे भेजते हुए इस गेंद को 6 रन और खाते में जोड़ लिए. 6 रनों के साथ रन संख्या
108 तक पहुंच चुकी है। ओवर की समाप्ति 107 पे 2, 13 समाप्त, 7 ओवर का खेल। जियाद मागरे बढ़िया ओवर रहा था, 5 गेंदें बेहतर, पर अंतिम गेंद पर जो बड़ा प्रहार बानो पोनिया के बल्ले से 15 पर पहुंच गए। 8 गेंदों से दानिश ने 31 रन बनाए और यहाँ से अब आखिरी 7 ओवर और अब रन गति को भी बढ़ाने की कोशिश जरूर होगी सुल्तान द्वारा, क्योंकि आपके पास अभी विकेट सुरक्षित हैं। अगर जिक्र करें तो 8 विकेट सुरक्षित हैं। बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प आपके पास हैं, उनका बेहतर तरीके से प्रयोग करना है। अंतिम ओवर्स में आसिम बशीर और वसीम काचरू जो आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं, प्रारंभ करने आए थे। बस स्पेक्ट्रम किंग्स के गेंदबाजों की प्रशंसा करनी होगी। शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने, खासकर फैजुल्ला डार। आज उन्हें विकेट नहीं मिला, विकेटलेस जरूर रहे, पर गेंदबाजी कमाल की इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक के अगर उनके 4 मुकाबलों की बात करें, और पहली जीत की तलाश होगी क्या आज इस अंतिम मुकाबले में? जीत अर्जित कर पाएगी स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम, या फिर सुल्तान की टीम को यहाँ खाता खोलने में सफलता मिलेगी? अगर अंक तालिका की बात करें, जीत की बात करें, और कोशिश जरूर होगी, क्योंकि सुल्तान पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार उनने मुकाबले आ रहे हैं। पिछले 3 मुकाबले लगातार उनने हारे हैं, 2 यहाँ पे, एक पुलवामा प्रीमियर लीग में, तो 3 लगातार, और उससे पूर्व बांडीपोरा प्रीमियर लीग का फाइनल। तो करीब करीब 4 मुकाबले वो एक रो में हारे हैं लगातार। तो यहां से एक जीत की तलाश है सुल्तान की टीम को। बानो पूनिया 15 पे, दानिश मुजफ्फर 31 पे, 8.23, 107 पे 2, 13 के बाद 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जियाद मागरे 1 ओवर 11 रन। एक बार फिर इम्तियाज को संभवतः लेके आए हैं, जो इससे पूर्व पहला स्पेल में, अपने पहले स्पेल पर उन्हें 2 ओवर की गेंदबाजी संभवतः की थी। 1 और ओवर लेकर के तैयार नॉर्दर्न पवेलियन एंड से 107। और यहाँ आक्रमण जरूर देखने को मिलेगा, कुछ विस्फोटक अंदाज जरूर देखने को मिलेगा बल्लेबाजों का। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बाएं हाथ से, हल्के हाथों के साथ बैक पर जाकर के उसको दिशा दे दी। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। 1 और खाते में। इम्तियाज का यह आखिरी ओवर है, इससे पूर्व 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। ये चौथा ओवर उनके कोटे का, 3.123। सामने दानिश मुजफ्फर 107 पे 2। ये बड़ा स्ट्रोक है, पर पीछे फील्डर है जी नहीं, गेंद उनसे रुकी नहीं और सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 मिल जाएंगे यहां पर, चौका मिलता हुआ नेल्सन स्कोरबोर्ड पे। 111, 111, 111 पे 2। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर। दानिश मुजफ्फर और उनके साथ बानो पूनिया बीच मैदान में। ओ ये देख लीजिए, फील्डर के साथ साथ गेंदबाज भी निराश जरूर है। रन संख्या में वृद्धि होती हुई जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 13वां मुकाबला, फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत है। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को स्लॉक के रूप में खेलने का प्रयास था, पर सफल नहीं हुई। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। 111 पे 2, 13.3 ओवर की गेंदबाजी। 35 पे दानिश मुजफ्फर, और दानिश ने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, वो बड़े प्रहार करना चाहते हैं यहाँ से। आवश्यकता भी है आक्रमण करने की, क्योंकि बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। बेहतर स्ट्रोक है, और गैप में गई है गेंद, सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक और चौका मिलता हुआ। 4 खाते में, और 4 रनों के साथ ही रन संख्या में वृद्धि। और 4 रनों के साथ अब रन संख्या जो है वो 117 तक पहुंच चुकी है दानिश मुजफ्फर। और देखिए, पहला मुकाबला संभवतः इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, और पहले ही मुकाबले में प्रदर्शन दानिश मुजफ्फर का। बेहतरीन और शानदार खिलाड़ी हैं, आकर्षक क्रिकेटर हैं, प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, और उन्होंने कर दिखाया है बहुत ही बेहतरीन पारी के लिए। अभी तक इस मैच में 115 तक पहुंचा दिया है, और यहां लेग बाय का इशारा अंपायर का। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच गई है 116 पे 2 विकेट। 13.5 अंतिम गेंद का आना बाकी, और इस ओवर में 2 चौके, उसके अलावा 1 बाय। 9 रन आ चुके हैं 5 गेंदों से। 31 रन खर्चे हैं 3.5 ओवर की गेंदबाजी में। इम्तियाज अहमद ने 1 विकेट जरूर उनको मिला। 116 पे 2 आखिरी गेंद, इस बार डाउन द ट्रैक, स्टेप आउट करके बाहर निकले, हवा में गेंद, मुदस्सिर से कैच छोटा। ये
तीसरा अथवा चौथा अवसर आया है आज फील्डिंग में जहां कैच छूटे हैं। और जब आप इस प्रकार से कैच छोड़ेंगे तो फिर मैच जीतना आसान नहीं है। आपको फील्डिंग गजब की करनी है, फील्डिंग बेहतर करनी है, फील्डिंग में सुधार लाना ज़रूरी है। ये देख लीजिए मोहम्मद मुदस्सिर से कैच छूटा, अनुभवी खिलाड़ी है। ओवर की समाप्ति, यहाँ 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 14 ओवर की समाप्ति के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 117 2 विकेट पे 8 सुरक्षित हैं। दानिश मुजफ्फर और बानो सेट बल्लेबाज। 6 ओवर 10 रन प्रति ओवर तो 60, 177 करीब करीब 170-180 के आसपास लक्ष्य हो जाएगा। पर इस विकेट पे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले 1-2 मुकाबलों में एक चुनौती जरूर रहती, पर यहाँ पर हमने जिक्र किया कि 2-3 ऐसे अवसर हैं जहाँ पर मुकाबले चेज हुए हैं और 2-3 अवसर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल अब नज़दीक जा करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिरी मुकाबला है आपके पास। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपके पास अब यहाँ से ओके कोई और ऑप्शन बचा नहीं है और इस मैच को हर हाल में वो जीतने का प्रयास करेंगे। एक सम्मान और एक तोहफा देना चाहेंगे अपने समर्थकों को। वहीं पे सुल्तान की टीम चाहेगी कि जीत के साथ शुरुआत की जाए इस मैच में। सामने की ओर खेला जरूर था पर गेंद स्टंप हाथ से टकराने के बाद संभवतः स्टंप से टकराई और वहां पर आउट करार दिया गया और क्रीज से बाहर जरूर रह गए थे बल्लेबाज। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विकेट मिलता हुआ 117 पे तीसरा विकेट 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Catch gone down in other over, but Jad Magre. And look at that, there was little deflection of his fingertips that going on to hit the non-strike end. Danish Muzaffar, he was well short of his ground and crease there. He's going to be run out. Jad Magre is having slight good record in first class cricket. Scored 68 against Tripura. And take a look again with that shot. He comes forward onto the front foot. And there he was caught short of his ground. He is unhappy. Look, he's looking at Banu, telling him that you sacrificed myself. You sold me down the river. And Banu says, what can I do? You have to walk back. That brings the captain in at number 5. He walks in at number 5. Not going with Zola and someone else. They do have 6 overs at their disposal, 36 balls. Now they require. Now they are just 35 balls at their disposal as we are into the 15th over. And it was the first ball of 15th over where Jihad Magre, he gets that one in the form of run out. 117 for 3. Sultan Warriors just trying to cheer up a bit and gear up a bit. In the meantime, there is a wicket against the run-up play. Danish Muzaffar perishes in the form of run out. Jihad Magre, and I still remember that last over 6. And it was Banu there on that occasion. He dispatched the ball. And this one, that's again aerial. Where is this one going? And that's gone into the fence for 6. For a while it looked like that Banu is going to be in a kind of trouble. The way he was down on his knees there, it looked like that he is going to be in sort of bother and trouble, but that goes past to the man there on the boundary line. Look, that was the reaction from Banu there, but he's lucky. He gets away with that one. There was enough flight. The next one can't beat the man on edge of the circle. The good thing about Banu is he's in search of runs here. He's using that aggression, intent. He's making his intentions clear here. He's going for runs. 22 of 12. Jihad Magre. And this time comes down the track again. And this one is out of here once again. It's the second ball we lost because of Banu today. The second big 6. And both 6 has gone out of the center. And TV umpire need to walk onto the field with that briefcase. Do we have another ball in place? It looks like that we have another ball. Look at the Balwinder Kumar Soni says, yeah, we have another ball in place. Oh, that's gone back to the bowler on the bounce, so no problem at all. It's 1-2-9, 2 6s in and over here for Banu against the likes of Jihad Magre. He's gone for 23. The last ball of his second over.
guided nicely in the gap, down to the backward up point boundary for 4. Quality batsmanship. Banu and his eyes lit up on that occasion. His sights width on offer. He guided it nicely, delicate. Oh, look at that. He's made light work of that. And Jihad Magre isn't happy at all. But that's the beauty of batter. It's gone wide of the field. It wasn't easy to cut it off. Gonna be runs, and the outfield is so quick here. It's so nice. It's gone down the slope and down to the boundary for 4. And with that 4, it's 133 for 3 after 15 overs. And this over, one big over from Magre there. He's gone for 16. Or more than that? I think he's gone for 14. And that means he conceded 13. I think he conceded 11 off his first. He's gone for 16 this over. 2 sixes and a boundary. Makes it 16 of the over. And another massive over, another big over coming for Sultan Warriors. Captain is there. He's going to face the likes of Jihad. It is going to be Jahid Trak top right now. Jihad Magre taken for runs here. Taken to the cleaners, we can say. As he's gone for 27 off his 2 overs. And look at the economy. Over 13. As he conceded 27. Captain is marking the fresh guard. He's going to lock in there. And is getting ready. Some of the fielders scare on the off. One behind scare there. Jihad. And it is Jahid Trak. The first ball deep down the crease. Over mid-wicket for 6. And that was asking to be hit. He gets in possession. What an adjustment by the batter there. Take a look again. The way he pulled that one. We call it flow with flourish. What a connection. Lovely timing. Oh, it was a slower one. But he picks it up. Nice observation. The eyesight, that was perfect. He read it properly out of the hand. The next one is again. That one, it's aerial again. It's gone on to the onside. This time over corner for 6. And look at that advertising hoarding. It's done a damage to that advertising hoarding. Amenity block. It tripped through. Gone for 6. 2 on the trot. And no change in intention. He's going to go. He's going to go for runs here. The second 6 of the over. 2 balls yielding dozen. 2 sixes on the trot. 2 गेंदों से 2 छक्के और नदीम डार कुछ अलग प्रकार में दिखे हैं और बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है क्योंकि पिछले मुकाबलों से उतना ज़्यादा उनका योगदान रहा नहीं है और ऐसे में आज आवश्यकता की ज़रूरत वाइड का इशारा अंपायर रवि कुमार का 1 रन और खाते में जुड़ेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के रन संख्या 146 3 विकेट पे 15.2 ओवर की गेंदबाजी प्रोजेक्टेड स्कोर 190 9.52 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जाहिद तराक इस ओवर में 2 छक्के 1 वाइड 13 रन आ चुके हैं अगली गेंद नदीम के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर एक बार फिर गैप में गिला है गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और चौका ये तीसरा बड़ा स्ट्रोक 150 रन पूरे होते हुए 2 छक्के 1 चौका नदीम डार ने इस ओवर में लगाया है जाहिद तराक के विरुद्ध रन गति को पूरी तरह से आक्रमण दिया है खूबसूरती के साथ स्टंप्स को कवर किया ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर जा रही थी और उस गति का इस्तेमाल करते हुए दिशा दे दी चौका बटोर लिया 4 और खाते में 150 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के बाद 15.3 ओवर में और इस ओवर में अब तक 17 रन आ चुके हैं 3 गेंदों से 3 गेंदों का आना बाकी 26 रन 1.3 ओवर की गेंदबाजी में अब तक जाहिद तराक ने खर्चे हैं नदीम डार 16 पे मात्र 3 गेंदों से बानो 32-15 गेंदों से ये आक्रमण की आवश्यकता भी है क्योंकि आपके पास विकेट सुरक्षित हैं तो ऐसे में आपको अभी यहाँ से प्रहार करने ज़रूरी है और चाहे कि यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम के ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पर खड़े कर दिया जाए एक बड़ा लक्ष्य दिया जाए स्पेक्ट्रम किंग्स को और एक चुनौती रहे उनको दूसरी पारी में साइकोलॉजिकल प्रेशर रहे उस बड़े लक्ष्य का बड़े स्कोर का वो कोशिश ज़रूर फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है अब जाकर के नदीम डार एक बार फिर तैयार 3 गेंदें 16 पे नाबाद 150 पे 3 7 सुरक्षित सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 13वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस और इस बार फिर गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर एक और चौका ये दूसरा चौका 2 छक्के और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 21 रन अब तक आ चुके हैं ओवर से That's a quality shot inside the line, improvise, and interesting to see. There was a change in the field. There was a man around that scale area. He was asked to stay inside around that short mid-wicket area. But look at the improvisation, the great presence of mind. Oh, what a shot.
Nicely done, neatly done by the captain of Sultan Warriors. Next one, yokes him on that occasion. Good delivery. He's got the pace. But the first one I still remember, it was back off the end slower. But there was no respite. There was no respite for bowler as he decided to go at it. And he with that one to perfection. It's 154 now. As we are in over number 16. This over 6, 6, 12, 13, 17, 21 of 5 balls. A dot delivery. And still 17 from it. The last ball is going to come. He's batting deep in crease. And that one, where is this one going? Looks like it's going to be, oh, he's got, he dropped. I can't believe what's going on. It looked like it landed in the safe hands. It was in the hands. And then it popped out all of a sudden. Well, comedy of errors, believe in his ear. Well, one will be astonished to know what was going on. Oh, come on, dear commentator, you throw it out, he's caught. And in the very next, we can say next second, it's dropped by Azmat Rishi there. Take a look again. It was aerial, but that was a square-driven shot. The way he picked up that one looked like a good one. Look, what's going on? Oh, come on. Should have been taken. Look how he's looking at the ball. Then Azmat Rishi, he's a young lad. He's going to be a good cricketer in years to come. But look at these things will teach them the lesson. And he's going to learn the lesson. But he dropped a dolly there. Should have been taken. Should have been taken. And later on, he has realized that what happened to me here. Because I'm on screen right now. Has it gone down? But he's still a brilliant cricketer. He's a young lad. And believe me, Azmat Rishi is going to be another one to watch out in coming years. It's 155 for 3 after 16. Even I threw it out. Gonna be caught. It landed in the safe hands. And it popped out all of a sudden. 155 for 3. He proved me wrong in the end. निश्चित तौर पे हालांकि वो गेंद हाथ में ज़रूर आई और उसके बाद फिर अगले ही पल वो गेंद ज़मीन पे जा टकराई उनके गेंद से छिटकते उनके हाथ से छिटकते हुए वो गेंद और वहाँ पे जीवनदान मिला था नदीम डार को। नए ओवर की शुरुआत मोहम्मद मुदस्सिर। इससे पूर्व 2 ओवर 12 रन 6 के इकॉनमी के साथ ये तीसरा ओवर उनका 17वां ओवर पारी का स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब की ओर से 155 3 विकेट पे 16.1 ओवर की गेंदबाजी और निश्चित तौर पे वो 180 के आसपास पहुंचने का सफलतापूर्वक प्रयास। 7 विकेट सुरक्षित कोशिश जरूर होगी उससे भी अधिकतम पर स्पेक्ट्रम किंग्स चाहेगी कि कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए। यहाँ टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग second edition 2025 presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. मोहम्मद मुदस्सिर ये गेंद और इस बार नदीम डार को बोल्ड कर दिया यहाँ पर। हालांकि थोड़ा शफल जरूर किए थे लेग स्टंप की और जगह बना करके स्ट्रोक मारने की कोशिश पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया। स्टंप से जा टकराई बोल्ड हुए 21 बनाए 8 गेंदों का सामना किया 155 पे चौथा विकेट गंवाया है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम ने। तो अब 6 विकेट सुरक्षित हैं पर यहाँ विकेट का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि इसके बाद 3 ओवर का आना बाकी। कुल मिलाकर अभी भी 23 गेंदों का आना बाकी है। कोशिश ज़रूर होगी कि 40-50 रन और जोड़ लिए जाए। वो पूरी तरह से यहाँ अस्त व्यवस्थ कर दिया और आक्रमण कर रहे थे नदीम डार। लगातार जब से आए थे बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास उन्होंने किया था। 2 छक्के 2 चौके उन्होंने लगाए थे पिछले ओवर में। वहाँ गेंदबाज के विरुद्ध और वो कुछ रन जरूर बटोरे थे। ये देख लीजिए चतुराई के साथ ये फेंकी हुई गेंद थोड़ा शफल कर रहे थे लेग साइड में रूम बनाने का प्रयास था पर फॉलो किया बल्लेबाज को सीधे स्टंप्स पे जा टकराई 155 पे 4 16.2 भानो 32 पे 15 के दूसरे नदीम डार आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज। मुदस्सिर 2.2 ओवर 12 रन 1 विकेट। कमाल की गेंदबाजी अनुभव उनके पास उस अनुभव का बेहतर प्रयोग किया है। और अब जाकर के ज़ुहूर जोलो जो आज पहला मुकाबला खेल रहे हैं जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल अथवास विद कॉन्फिडेंस। 13वां मुकाबला अवसर मिला है आज सुल्तान के साथ इस प्रतियोगिता में खेलने का। यह पहला मुकाबला है उनका इस टूर्नामेंट में टीम सुल्तान के लिए। और ऐसे में 155 पे 4 और उनकी में भी क्षमता है। आखिरी 3.4 ओवर का खेल बचा है यानी कि कुल मिलाकर अभी भी 22 गेंदों का आना बाकी। ज़ुहूर जोलो और बानो बीच मैदान में तो कहीं ना कहीं 180-190 155 for 4. Mudassir Maulvi removed and Mohammad Mudassir removed the captain of Sultan Warriors. He played that cameo of 21 from 8 but great to Mohammad Mudassir and Nadeem Dar unable to read him properly misread and was cleaned up. And this lad Sultans were missing the likes of this lad, this man, and it's Zuhur Zola on your screen right now. He's back into the playing 11. Nazir, every owner should try, go with the local boys.
they possess talent. I don't mean that there is no talent in other states. They're immensely talented. But when we provide them a space where they can breathe free, then they can excel in their future endeavors. 155 for 4. He's caught and bowled here and was surprised by the beauty from Mohammad Mudassir again. He comes forward. He took pace off the ball holding up a bit, and he was caught in two minds. Can't stop the ball. Take a look again. We're going to watch this one again. How he was trapped by Mohammad Mudassir in his web. Look at that. Oh, unable to control that shot in the end. And he hands him a juicy one, and is taken. He's on his way back to pavilion. Gone without scoring. Golden duck. Another bad outing. He's gone cheaply here. And I was just talking about that. Believe in local talent. And he thrown his wicket away. But there are going to be too many days to come, and there are going to be some of the big events coming up, so where he can still flourish. But he missed out on another occasion. But today it was an opportunity to grab. And once again he thrown this one away. Unable to grab it. It was better to grab it with both hands. He needed to keep that clutch in place, but unable to stay grounded and unable to stay calm there as he came on to the front foot. And once again, it looks like that they're going to lose that initiative. They were going really nice, and captain lost his way. And on a very next ball, we saw the backup, Zuhur Zolo. And it's going to be Mohammad Mudassir on hat-trick now. Is he going to climb that hat-trick here? 2 in 2. 155 for 5. Interesting figures. The hat-trick ball is coming up. That brings Umesetu. He's at number 7. Mohammad Mudassir, who gone 4 runs in his first over. Then he kept things tight. The second over, that was good. And the third one is eventful, where it's handful. He has picked up 2 already. And he's on a hat-trick. He's on a roll here. Is he going to pick third one? That is going to be the hat-trick for the man. Will he pick that? No, there is a correction coming in. There was a dot in between. So that isn't going to be a hat-trick at all. And scorer now letting us know. It was displayed that 2 in 2. And where is this one going? It's Mohammad Mudassir to Umes. Wraps him on pad. This time he's a bit lucky. That was going down the leg side. It was going further down leg. It drifted on that occasion. That save with Umes. Imtiaz is having a word with Umes, telling him, I think you were surprised with that one from Mohammad Mudassir. Umes says, okay, don't worry, take it easy. 155 for 5. Sultans once again in a kind of a tricky situation once again, as they lost 2 wickets in quick succession. The last ball. Oh, look at that one. Mohammad Mudassir is smiling. All smiles as he beaten Umesetu. And Umes has no idea what happened there. He's clueless once again. But that was absolute beauty from talented lad, from Mohammad Mudassir. A ball that kept Umesetu on his toes without knowing what kind of a delivery it was. He was surprised, clueless, speechless, and was lip-locked for a while. He has no idea what to do. And on the other side, just 3 overs are going to come now. 18 balls. What do you make of it? What do you think? Where are they going to finish it off? They're 155 with 3 overs to go. 180 के आसपास ज़रूर होगा हर 3 ओवर में. अगर आप 20-25 रन और जोड़ लेते हैं तो फिर 180 वो क्षमता है दोनों बल्लेबाज में. हालांकि उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उमेश में वो क्षमता है, बानो में वो क्षमता है. 3 ओवर का खेल, प्रहार ज़रूर होगा. 155 पे 5 17 समाप्त. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला आखिरी 3 ओवर का खेल. मुदस्सिर ने बहुत बेहतर गेंदबाजी. 3 ओवर 12 रन 2 विकेट. जाहिद तराक का इस्तेमाल एक बार फिर किया जा रहा है. 18वें ओवर में पहली गेंद बानों के लिए. ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद. उस गेंद का पीछा कर रहे थे, पर प्रश्न जरूर था अंपायर की तरफ देखा, शायद वाइड बॉल हो गया, ऐसा हुआ नहीं. 155 पे 5 डॉट के साथ शुरुआत जाहिद तराक के इस ओवर की. 2 ओवर में 31 रन. काफ़ी खर्चीले साबित हुए हैं जाहिद तराक. वो खास कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया अभी तक इन मुकाबलों में. ये उनका दूसरा मुकाबला है इस टीम के साथ, पर कोई खास योगदान उनका रहा नहीं अब तक. जाहिद तराक का अगर हम बात करें, इस मैच में भी काफ़ी खर्चीले साबित हुए. 31 रन 2.1 ओवर में. 155 5 विकेट पे 17.1. 18वां ओवर.
JK Super Cement Red Premier League 2025 second edition presented by Athwas Retail, Athwas with confidence। और यहाँ एक हाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बल्लेबाजी करने होंगे इन दो बल्लेबाजों को। बड़े स्ट्रोक जरूरी हैं, बेहतर फिनिश देना होगा इस पारी को। बानो सामने 155 पे 5 और इस बार गेंद गई है ऑन साइड में, हालांकि फील्डर उसके पीछे, देखना होगा क्या रोक पाएंगे अथवा नहीं। और बिल्कुल बाउंड्री के आसपास उन्होंने गेंद को रोका जरूर है, पर कुछ रन जरूर बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन और खाते में, 155 से बढ़कर 158 पे 5, 17.2 या 18वां ओवर। और अभी भी 16 गेंदों का आना बाकी, 158 रन बना लिए हैं। 4 गेंदें इस ओवर की शेष हैं, 3 रन और इस ओवर में 2 गेंदों से 3 रन आए हैं। उमेश को खाता खोलना बाकी है 35-17 गेंदों से। बानो जो कि 200 से अधिकतम के स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर उमेश को अंतिम ओवर्स में कुछ विस्फोट करना होगा, कुछ आक्रमण करना होगा, बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी, शानदार बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आवश्यकता भी है इस समय अंतिम ओवर्स में। 158 पे 5, 17.2 ओवर की गेंदबाजी। उमेश सामने जाहिद दराग। एक अच्छा और बेहतरीन ये मुकाबला, 13वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। जाहिद दराग एक बार फिर नीचे रहती हुई गेंद, तेज जरूर थी पर पड़ने के बाद सीधी रहती हुई, ज्यादा उछाल था नहीं गेंद में। ऐसे में खड़े खड़े वो बल्ला लहराया जरूर, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 158, 5 विकेट उमेश और बानो। सुल्तान एक बार फिर पहले 10 ओवर बहुत बढ़िया रहे, अगले 10 ओवर में अगर हम बात करें तो उस प्रकार का प्रदर्शन रहा नहीं और विकेट भी जरूर गए। वहाँ 2 विकेट और उसके बाद अब 3 विकेट, यहाँ 40-50 रन के भीतर उन्होंने गंवाए हैं अगले 7 ओवर्स में। जाहिद दराग इस ओवर में अगली बार उमेश के लिए फिर ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इस बार वाइड का इशारा होगा। थोड़ा बल्लेबाज की रेंज से दूर रख रहे हैं जाहिद दराग, वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास है। जानते हैं उमेश की रेंज में गेंदबाजी करेंगे तो फिर गेंद सीधे स्टैंड्स में जा लगेगी, क्योंकि वो क्षमता उस बल्लेबाज में है। 159, 5 विकेट पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी। 18वां ओवर, 3 गेंदों खाना बाकी और उमेश को अभी भी खाता खोलना बाकी है। 3 गेंदें अभी तक उमेश ने खेली हैं और पहले रन के लिए वो इस समय जूझ रहे हैं। वो पहला रन अभी तक उनके बल्ले से आया नहीं है इस पारी में। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। देखिए अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, आप सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करें तो शायद वो बेहतर रहेगा। पर यहाँ आपका फुटवर्क बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। अपनी जगह आप वो शरीर से दूर खेलने का प्रयास, कभी गेंद की उस लाइन तक पहुँचने का प्रयास, गेंद तक पहुँचने का प्रयास, एक अतिरिक्त जोखिम लेने का प्रयास, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। 4 गेंदों से खाता खोलना बाकी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये 4 गेंदें इस ओवर की। 159 पे 5 जाहिद दराग। इस बार धीमी गति की गेंद पैड पे टकराई। रन तो पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, ये लेग भाई के रूप में रन जरूर मिलेगा अथवा भाई के रूप में ये देखना होगा। 1 रन जरूर जुड़ जाएगा खाते में। 160 पे 5 बाई के रूप में ये रन मिलता हुआ संभव थे। 160, 5 विकेट के नुकसान पे 17.5। अच्छा ओवर जाहिद दराग का, मात्र 4 रन आए हैं इस ओवर में। 5 रन आए हैं इस ओवर में, क्योंकि उनने 2 ओवर में 30 रन खर्चे हैं और यहाँ 5 गेंदों से 5 रन आए हैं। अच्छी वापसी इस ओवर में। बानो सामने, स्ट्रोक अच्छा है पर फील्डर तैनात हैं। हल्का सा फंबल हुआ, जहाँ पे एक ही रन होना चाहिए था, इम्तियाज से वो फंबल हुआ और पलटकर दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अंतिम गेंद पर 2 आए, ओवर की समाप्ति। ओवर से आए 7, 18 समाप्ति। 162 पे 5 सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। Umesh is going to be on strike. He was surprised by Mohammad Mudassir in another over. And this one is going to be the final over of Mohammad Mudassir when it comes to his individual quota of 4 overs. He has bowled 3 tight overs in today's match and has picked up 2 wickets. In a space of 3 balls, he removed 2 of the batters. Jai 3 overs, none for 37. Will he bowl that final over? That remains to be seen, and we'll have to wait and watch who will bowl that final over. But right now, Mohammad Mudassir with that over number 19. Captain walks up to Mudassir. Little pep talk going on. There is a man at backward a point. Man at short third. Umar Zuhur is there. And on the backward a point, short backward. There is a man at backward of scare.
And he's up inside 30 yard. Umas first ball pulls it, did in middle. This would have been somewhere in the stands, but he's unable to middle that one. Umas has got a good bat speed. The ferocity is there. The way he brought his bat down in time, brings his bat quickly down in time. Banu is going to be on strike. 37 of 18. Another cameo. Enterprising knock. 163 for 5. And keeps Banu under check there. Are they going to look for the 2? No way. I don't think. Oh, this could be tied from other end. Umesh Setu, he was caught in two mind. Should I? And it was just like that. Yes, no, yes, no. But in the end, Umesh decided to settle for 164. With 10 balls to go. 10 balls remaining. Nazir, you said 180. Is going to be their priority. They should prioritize that. Here is Mudassir again. Umesh doesn't connect again. Is beaten completely on that occasion. It's another precious dot from Mohammad Mudassir. Look how he's bowling today. He's spitting that fire with the ball. He's got that spirit. And he's got that pace today. He's firing in. 3.3, 2 for 14. Umesh is yet to connect. 7 balls for his hot pot 1. This time once again that hit hard down the ground. Gonna be single there. And that's all he's gonna get. He used 8 balls for his 2. That brings Banu on strike. Is he gonna launch? Where is gonna find the boundary? He will be eyeing one here. But Mudassir looks cool, composed and compact in today's spell. He's keeping batter under check. Isn't allowing to break free. How come a batter will break free here? Let's see. 2 balls to go in his quota. On try again. Call is for 2. Are they going to look for the second? Yes, there is a fumble. The second run is on. And the 2 batters crossed over. With that brace, it's 167. This over. 5 coming of 5 balls. 5 of 5 balls. 7 balls are going to come. It's 165 for 5. Where is the last ball going? It's 167. Banu into the 40s. Invaluable contribution. Batted really well. Scoring 40. That's a good contribution. That's a healthy. That one flicked. Fine. Down to the 5-leg boundary for 4. Finest of the shots. Inside the line. And Mudassir can't believe it's 171. Shuffle across. Inside the line. And just helps that one on its way. He helped it to 5-leg boundary. Oh, look at that quality shot. No. Not that much shuffle there. He was waiting for the ball. He was very much ready there and gives it a direction. And with that boundary moves to 44. What an innings. Not just enterprising. One composed, full of composure. 44 of 21. 171 for 5. 6 balls are going to come. The final over remains to be bowled. And Jayed has got the ball again. He has put on that hairband. Well, it reminds me of Nathan Bracken. And there was Ashok Dinda from Men in Blues, or the man from Bleed Blues. It's 171 for 5. 19 done. The last over is coming up. 4 overs, 2 for 21. Impressive figures today. Their experience, that tall stature of techniques shown by Mohammad Mudassir here today against Sultan Warriors. 171 for 5. First ball, Umesh dig out nicely. Good stop. Look at the fitness level. Looks okay, looks fine there. Before he could turn around, there was an opportunity and the 2 batters scamper through. Umesh unable to break free. He has used 9 balls for his hot for 3. Overall 172 for 5. 5 balls are going to come. The last over. Sultans will try to finish behind 180s. That straight to the man at long on. Wanted second. Won't get that. Are they going to look for the second?
And look, he's telling him, take it easy, take it easy. Stay cool, and stay calm. Banu wanted second. He's trying to push for the second one, as he knows that there is going to be importance of each and every single. Every run will count. 173 with 4 balls to go. Good start to this over. 2 singles coming. And Umesh missed out on that occasion. Directly needed, and Banu was on his way. And it's a bye signal. So 3 runs of 3 balls. Banu on strike again. On to 45-22. He needs 5 to get to his 50. That's going to be the second one on the trot. Straight away. Is he going to get there? 5 more needed to bring up his 50. 174 for 5. 3 balls are going to come. Jahid, he looks good in this over. And that one again, it stays too low. And MS wanted single, and Banu sent him back, telling him that there is no need to run. There is no need to scamper through. Let me take charge. I will manage myself. A dot delivery is like gold dust. It has got a weight and worth. It's of huge importance. Good delivery from Jahid Trak there. What a delivery. Superb one. A dot delivery. Now 2 balls to go. On strike is going to be Banu again. This time he connects. And that one will bring up his 50 with a lusty blow onto that. Oh, that's gone again out of the center on the bounce and out of the center. 180 on the board. And Banu on to 51 of 24 balls. This is the second straight 50. Yesterday scoring 50, and today once again he's batting with a strike rate of 212. That's what T20 cricket is all about. 3 fours and 4 towering sixes. 51 of 24 balls. Another great innings. Look, just 24 balls for his 51. That's why he asked it, and he said, oh, may I stay there? I will manage myself. That's what. He's capable of 1 bounce and a couple of bounces, and then it's out of here. 1, 2, and it goes over. The last ball of inning number 1. Banu will try to launch again. Can he do so? Is he going to go big here? 45, 3.5. The last ball, supreme, gorgeous, glorious, and it's gone all the way over extra cover for yet another magnanimous, towering, powering for another half a dozen. They finish on 186. 187 is going to be the target. Join us in a while. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.
Welcome again. Assalamu alaikum to all of you. It's 187 to get from 20 overs. And Spectrum Kings, they need to win this one. It's a must-win clash. It's a must-win game. And their last league game in the tournament. Jihad Magre is one of the opener. And has he got Danish Halal on the other side? Let's see. Let's watch and let's find it out. Salman is the Sam lad. The Sam bowler who's going to open the attack from Southern Pavilion end. It's gone cool here. And there are bigger shades available on the field right now. 187 is the target. Jihad is getting ready to face the likes of Salman. Slip in place. Danish Muzaffar is there. Wasim Kasur is keeping stumps. Salman to operate. First ball of franchise. Nicely blocked. Right on money there. And Jihad Magre, tall lanky lad. Keeps it back along the track, not for runs. He's a tall man. He need to bend his knees at times. First one that was at affordable height and bounce. Plays it back along the track. This is JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. That's in the gap. Nicely done. Good shot there. Punch up the back foot. Solid shot on that occasion. He's up the mark with that boundary. He opened his account. Not trying to hit hard. Just going on to the front, back foot. Then keeps it away. Look at that. Punched nicely. On top. Rising to the occasion. On his toes. And keeps it away. Through covers for 4. Zolo unable to cut it off. Good start. Jihad is off the mark with the boundary. The next one. He is surprised with that one, trying to drive at it, but no connection. It stays low, it kept low, it keeps low. And Wasim Kasur is telling him, look, first one, where you punched the ball, the second one, this is going to be the important aspect of the game. And you have to keep that thing in mind. The bounce, you can't trust it. One that was at affordable height, the next one stays too low. That wasn't easy to pick. स्वागत आपका दूसरी पारी में प्रारंभ हो चुकी है यह पारी 4 पे जिहाद मागरे दानिश हिलाल उनके साथ और सलमान ने शुरुआत की है गेंदबाजी हाँ एक और बेहतर गेंद एक और खूबसूरत गेंद और सलमान की ये क्षमता है वो बेहतर गेंदबाजी शुरुआत में एक न्योता ज़रूर देते हैं वहाँ पर बल्लेबाज को स्वीकारने के लिए पर जिहाद मागरे का अनुभवी बल्लेबाज है आज प्रारंभ में आए हैं दानिश हिलाल के साथ एक अच्छी शुरुआत चाहिए और इस विकेट की अगर हम बात करें जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया है विकेट जो है कहीं ना कहीं एक दुविधा की जो है वो व्यवहारता है इस विकेट में कुछ गेंदें नीची रह रही हैं कुछ पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल ले रही हैं तो ऐसे में थोड़ा देख परख के बल्लेबाजी करनी होगी एक अच्छी शुरुआत चाहिए शुरुआत में थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास चाहिए विकेट के मिजाज को परखते हुए एक बेहतर और ठोस मजबूत आधारशिला प्रदान करनी होगी इस मैच में क्योंकि एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है सुल्तान के विरुद्ध 187 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को ये उनका आखिरी लीग मुकाबला 3 इससे पूर्व खेल चुके हैं तीनों में हार का सामना सुल्तान ने 2 मुकाबले खेले दोनों में हार का सामना और दोनों टीमें जीत के लिए इसमें एक दूसरे के साथ साथ धड़केबाजी लगा रही है और दोनों के लिए महत्वता है इस जीत की सुल्तान की टीम जीत के साथ ही निश्चित तौर पे बड़ी रहेगी और वहीं पे अगर दूसरी ओर बात करें स्पेक्ट्रम की तो उन्हें भी अवश्य इस जीत को करना होगा एक और बेहतर गेंद एक और खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ सरकाव था ऑफ स्टंप की और उछाल भी था गेंद में और पूरी तरह से वहां पर बीट किया बल्लेबाज को गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के ओवर की समाप्ति पहला ओवर समाप्त स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 4 बगैर नुकसान के Steady start, tight start in over number 1. Just a boundary, but that was classy of the bat of Jihad Magre. And after that, it is all about Salman, who kept Jihad Magre away from hitting the ball. And that shot, I still remember that shot. That was so nice. And there was elegance from Jihad Magre. And it's going to be Wasim Bashir again. And he's going to bowl from Northern Pavilion end. He's going to start afresh. The boy has got the pace. But need to mix it up at times. Adjust to the conditions. Adapting to the conditions is important. He has to find a way to keep batters under check. In his first game, that was expensive. As Wasim couldn't hold his nerve, unable to
control his adrenaline flow. 4 without loss after 1. He has that ability. He's got pace, but need to make it tough and tight for the batters here. He has to keep it simple and try to hit that corridor of uncertainty in between. What Wasim is going to do? The first ball, that's wide of the off. Danish Halal, unable to reach out. Little away to point of that Q and is in the end. It's 4 for none. We're in over number 2. Straight away they require at the rate of 9.72 and over. And that is the beauty of setting a high total. One big score on the board. 187 to get. Signal at a dead ball. He has to reload and re-bowl that one. The title partner JK Super Cement and presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. Red Premier League Season 2. Day 8, match number 13. 8 days of action. Match number 13 is underway. One more coming this evening. Dabs it away again. Danish Halal, he's technically sound. He has to bat through the innings. At least try to bat through the power play. Rotation is important aspect. They need to rotate in between. Dot deliveries will bring pressure on both the batters. If big shots are not coming, there is no need. There is no urgency. You have to look for ones and twos. Singles and doubles will make your work easy. And once the pressure is relieved, after that you can take your chances. Second over underway. Wasim is bowling from Northern Pavilion and in today's match. I still remember that game against the likes of Royal Goodwill. He started from Southern Pavilion and that over yielded plenty. That one sent it packing all the way over backward of scare. On to 10 in second over, and Danish Hilal opened his account with a lusty blow with a magnanimous 6 inside the line. Half tracker, easy picking, pull to perfection. Good connection. Lovely timing there. It was asking to be hit. And he said, yes, I'm going to pounce on it. 10 for none. This is over number 2 wherein 187 is the target. They need a positive start. They need a good start up front. They're trying to slash it. Doesn't connect. So no problem at all there. Chips in with a dot. Chipped in with a dot there. 10 for none. 187 is the target. And look at the boys from Sultan Warriors. They are looking energetic in today's game. There is going to be pressure on their nerves today, as they know that this is must win. This is important one to stay alive in the competition. And victory here will mean they are still alive. Excellent bowling in today's game straight away. He's look effective. He's look good. All is well that end is well. Consistency is important. He has to be consistent. Need to persist with tight lines and lengths. Smile on Danish Halal's face telling us that he will fight it out. He's batting outside crease. Knowing that Wasim has got the pace. He's trying to drive the ball. He's trying to find that gap on offside. It's 2 done. 10 for none. Jad having a word with umpire Balvendra ji there. Well, we're done with the second over here. Good over this from Wasim Bashir. Just that 6. And keeping that 6 away. All 5 balls were good ones. Where that pace and the little deviation getting better of the batter. As he chipped in with 5 dots.
It's just 10 on the board after 2 overs. The required rate is nearing in on 10 and over now. It's 9.83 at the moment. 2 समाप्त, 10 रन बने हैं। दानिश जलाल 6 और जियाद मागरे 4, 5 रन प्रति ओवर करंट रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 9.83। वसीम बशीर का 1 ओवर, 6 रन आए हैं और 4 रन दिए थे सलमान ने अपने पहले ओवर में। दूसरा ओवर होगा सलमान का, कोटे का। तीसरा ओवर सुल्तान की ओर से पारे का, बाएं हाथ के जियाद मागरे सामने। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे आ रही थी, हल्का सा उछाल था, सीधे बल्ले से खेला वही पास में बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन बने हैं और पहले विकेट की तलाश यहाँ पे स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को। सुल्तान को चाहिए शुरुआत में एक विकेट और वही एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, एक साझेदारी की आवश्यकता स्पेक्ट्रम की टीम को, ये सम्मान बचाने के लिए, क्योंकि 3 मुकाबले वो पिछले हारे। ये स्ट्रोक बढ़िया है, खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका मिलता हुआ रवि कुमार का निर्णय आता हुआ। रवि कुमार और उनके साथ बलविंद्र कुमार सोनी जो कि ऑन फील्ड अंपायर और टीवी अंपायर अथवा थर्ड अंपायर, शौकत मैडी स्कोरर, जहांगीर जॉन स्टैटिस्टिशियन शहनवाज वानी के साथ अपना दायित्व निभाते हुए जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 अथवास presented by Athwas Retail and Athwas with confidence। नए ख्वाब नए इरादे, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग। एक और बेहतर गेंद जियाद मागरे के लिए, 8 पे नाबाद है, 14 रन बनाए हैं। ये तीसरा ओवर, तलाश एक साझेदारी की, तलाश एक विकेट की और 14 रन बनाए हैं 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। सुल्तान की टीम एक विकेट की तलाश में। यह 13वां मुकाबला है इस टूर्नामेंट का। इसके बाद एक और मुकाबला जहां यूनाइटेड इंपोर्ट्स का मुकाबला हिलविव राजौरी के साथ। यूनाइटेड इंपोर्ट का आखिरी मुकाबला है, हिलविव राजौरी का भी आखिरी मुकाबला। वो अपने पूल से आखिरी लीग मुकाबला होगा। हालांकि 3 मुकाबले उससे पूर्व खेले यूनाइटेड इंपोर्ट्स ने और तीनों में जीता, जबकि वाहिद 2 ऐसी टीम है। यूनाइटेड इंपोर्ट्स 3 मुकाबले, तीनों में जीत। रॉयल गुडविल 3 मुकाबले, तीनों में जीत। और ये अपने अपने पूल से सर्वश्रेष्ठ हैं अंक तालिका में, 6 अंक लेकर के पूल ए और पूल बी से। पूल ए की बात करें तो रॉयल गुडविल 6 अंक लेकर के सर्वश्रेष्ठ, पूल बी से यूनाइटेड इंपोर्ट श्रीनगर। और यहाँ 2 अंक की तलाश में स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बीच भिड़ंत इस मुकाबले में बख्शी स्टेडियम, ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट। नए ख्वाब नए इरादे, रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। और यहां कॉन्फिडेंस दिखा इस शॉट में, सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए चौका एक बार फिर जियाद मागरे के बल्ले से और 4 रन और खाते में छोड़ लिए। इस चौके के साथ ही रन संख्या में वृद्धि। सलमान, और अच्छी गेंद थी पर स्ट्रोक उससे भी बेहतर था। गेंद की पिच तक पहुंचते सामने की ओर सीधे बल्ले से खेला, वाइड डिश लॉन्ग ऑफ पे चौका बटोर लिया बल्लेबाज जियाद मागरे ने। 4 रन और खाते में और 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई है स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब की 18 बगैर नुकसान के। आखिरी गेंद इस ओवर की 9.84 शुरुआत में रिक्वायर्ड रन रेट। अगर इस समय नजर दौड़ाई जाए रन रेट पे, जियाद बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद की पिच तक आ रहे हैं। ये अच्छी मानसिकता है, अच्छा माइंडसेट है, पॉजिटिव इंटेंट इस बल्लेबाज जियाद मागरे का। बहुत ही बेहतर इस विकेट को भांपते हुए, इस विकेट को परखते हुए, जांचते हुए, क्योंकि जानते हैं कि इस विकेट पे कुछ गेंदें पड़ने के बाद नीचे रह रही हैं, बिल्कुल भी उछाल नहीं है और कुछ अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद ऊपर आ रही है। उपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल है इस विकेट पे, क्योंकि जियाद मागरे जो एक अनुभवी बल्लेबाज है, तो इस विकेट की कंडीशंस को बखूबी पढ़ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट का जो व्यवहार है उसके अनुकूल बल्लेबाजी, ये अच्छी मानसिकता है और अच्छी खबर है स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के लिए। जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। हाँ, ये खूबसूरत दृश्य है, छोटे बालक एंजॉय कर रहे हैं उस संगीत पे और ये खूबसूरती रेड प्रीमियर लीग की।
वसीम बशीर एक और ओवर लेकर के पहली गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को सीधे भेज दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉन्ग ऑफ पे गई है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद सीमा रेखा से बाद चौका मिलता हुआ यहाँ पहली गेंद पर दानिश हिलाल द्वारा। दानिश हिलाल पहुंच गए 10 पे 7 गेंदों से 12 रन बनाए, 12 गेंदों से जियाद मागरे ने 3.1 ओवर की गेंदबाजी में। एक बार फिर ये स्ट्रोक को देख लेते हैं, खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन हस्ताक्षर किए अपने बल्ले से इस गेंद पर इस बल्लेबाज ने स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के लिए। ये चौका आता हुआ और चौके के साथ रन संख्या 22, 3.1 के बाद अगली गेंद वसीम की। इस बार बेहतर गेंद, खूबसूरत गेंद, पर्दे के बाद अंदर की तरफ आते हुए वो कोण बदला गेंद है और एक एंगल बना करके अंदर आ रही थी। भाग्य ने साथ दिया, गेंद स्टंप से नहीं टकराई। अन्यथा कहना चाहिए कि स्टंप्स के साथ बातचीत करती हुई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बेहतर गेंदबाजी, 22, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बहुत बढ़िया वापसी। वसीम बशीर द्वारा 10 रन खर्चे 1.2 ओवर में, पर विकेट की तलाश अवश्य सुल्तान की टीम को और एक पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को बड़ा करना होगा इन दो बल्लेबाजों को। यहां विकेट कीपर से चूक हुई, पर क्या पीछे फील्डर, जी हां, उमेश ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। भाई के रूप में ये रन मिलते हुए रन संख्या में वृद्धि होती है और रन संख्या पहुंच गई है 23 पे। 3.3 के बाद जियाद मागरे और दानिश हिलाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। जो इस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल बल्लेबाजी हो रही है और जानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत चाहिए, एक अच्छी शुरुआत यहाँ तो फिर अंजाम भी अच्छा हो सकता है। और वहीं पे सुल्तान की टीम हर संभव प्रयास में, एक विकेट चाहिए, इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना होगा। 23 रन बने हैं 3.3 ओवर की गेंदबाजी में। वसीम बशीर का दूसरा ओवर, 10 रन उन्हें खर्चे हैं। जियाद मागरे बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी, प्रतिभाशाली क्रिकेटर, 12 गेंदों से 12। एक बार फिर यात्रिक तो चलता है इस गेंद में, उछाल भी था, थोड़ा सरकाव भी था, बाहर की तरफ सरक रही थी, एक एंगल के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। गति का इस्तेमाल कर रहे हैं वसीम बशीर, उनके पास अच्छी खासी गति है। हो बहुत बेहतर गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 23 पर नुकसान के 3.4 जी के सुपर सीमेंट। नए ख्वाब, नए इरादे, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। नदीम डार के पास गेंद फील्ड कर लिया। 13वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का, दूसरी पारी, और एक और मुकाबला लेकर के पहुंचेंगे आप तक शाम 7 बजे। मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स बनाम हिलव्यू राजौरी। हिलव्यू राजौरी और यूनाइटेड इंपोर्ट्स का वो आखिरी लीग मुकाबला अपने पूल से। 3-3 मुकाबले, वो दोनों में टीम की बात कर रहा हूँ। चौथा मुकाबला हिलव्यू राजौरी का, चौथा मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स का। इंपोर्ट्स ने 3 मुकाबले जीते, हिलव्यू राजौरी ने 3 मुकाबले 1 जीता है, क्षमा कीजिएगा। और यहाँ विकेट मिलता हुआ अंदरूनी भाग, सीधे स्टंप से जा टकराई गेंद और एक बहुत बड़ी विकेट जियाद मागरे की। हिलव्यू राजौरी ने 3 में से 2 हारे हैं, 1 जीत अर्जित की है। थैंक यू मनोवर भाई। पर ये गेंद देख लेते हैं, विकेट देख लेते हैं। खूबसूरत थी, अंदरूनी भाग, सीधे स्टंप्स पे, और जियाद मागरे का विकेट मिलता हुआ वसीम बशीर को। सुल्तान वॉरियर्स को पहला विकेट, तलाशते विकेट के अंततः वसीम बशीर ने वो सफलता दिलाई और स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब ने पहला विकेट गंवाया। पीछे मुड़कर देखा पर वो कहानी समाप्त हो चुकी थी। वसीम बशीर ने उस कहानी पे दी एंड लगा दिया। ये अंदरूनी भाग लेने के बाद सीधे स्टंप्स पे, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। जिहाद मागरे बहुत बढ़िया खेल रहे थे। और अब नंबर 3 पे उस बल्लेबाज की बारी जिन्हें काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं इस प्रतियोगिता में, और टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। निश्चित तौर पे काम करने की आवश्यकता, काम करने की जरूरत इस बल्लेबाज पे। उनके कोच, उनके मैनेजर, बाकी टीम के सदस्य, ऑनर, और कोशिश होगी उनकी कि इन पे काम किया जाए। ये मैं समझता हूँ कश्मीर का, अगर कश्मीर क्रिकेट की बात करें तो कश्मीर क्रिकेट का भविष्य है। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन खिलाड़ी उभर करके आए हैं, उमैर ज़हूर, उसके अलावा फैजान मीर, फैजुल्ला डार,
और कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी भी। दानिश हिलाल भी बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं, तो इन्हें ग्रूम करने की ज़रूरत है, इन पे काम करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सही दिशा देने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ दिया ज़रूर है। और रेड प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें इस दूसरे एडिशन की, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। 23 पे 1 4 ओवर की समाप्ति। उमर जोर नए बल्लेबाज, वसीम बशीर 2 ओवर में 10 1 विकेट। कमेंट्री में परिवर्तन, आगे का विवरण मनवर्तन वीर। Steady start. And the last ball of over number 4 where we saw the back of Jihad Magre. That's a big loss, huge wicket. And that will boost Wasim Bashir as he gotten wicketless in the first game. Taken to the cleaners, gone for runs. And he gone for plenty, I think, in that game, and picked up wickets at the fag end, to be precise. Correction comes in as he was taken to the cleaners. He was under the pump earlier on, but later on, he was trying to bring things back on track, but that was too late. He did bowl well at the fag end, but on that day, nothing gone right for Pahalgam Express today. When his side needed a kind of an opening and a wicket, he provided that breakthrough, getting rid of Jihad Magre. Magre has played domestic level cricket. Having said that, he has 68 of best against the likes of Tripura. 23 for 1 after 4 overs. The required rate is past 10 now. They need to score at a good pace now. Up the rate to some extent. Danish Hilal and Umair Zuhur. Danish knows his role very well, so is Umair Zuhur. It's going to be young pair. And he joined by Umair Zuhur, the fresh pair of legs and hands walk out to the center. He walks out. Walked out at number 3. One more run, 24 for 1. Now these two batters need to rotate, look for ones and doubles. As he's getting ready, Umair scoring 46 in the first game, scoring 20 plus in the second game. And he's got all the shots. He's got that wide range of shots. In today's game, he's promoted up the order. He has to prove his mettle here at number 3, which is an ideal position for Umair Zuhur-like batter. He has to set the tone for big chase. Shubham Sharma into the attack. And that's the beauty of Umair. He's going to scamper through. He's going to pinch these cheeky singles. And this is where fielders need to be agile and on their toes to drive these runs. He's going to tire you out the way he's running between the wickets. He's so quick there, and that's the beauty of Umair. He's going to build his inning with ones and twos, and when required, he can go for those big shots. Rotation is important, and they're doing at the moment. They're going for ones, and ones will keep their chase alive, but they have to look for the big shots in between. This is the power play. If you can't score here, then how come you score? Once the power play is over, once the restrictions are gone, captain will have the freedom of keeping 5 boundary riders outside the 30 yard. Then it won't be easy to find the gap on Will. And that one, it's come up the queue end. Bit unlucky baller there. And batter is so lucky. Blessing in disguise. Gets away with that one. He was eyeing that mid-wicket zone, shaping for that slog hit, and is lucky. Ball holding up a bit again, and that's another aspect, and that's another important thing you need to keep in mind, that the bounce at times it looks like that it's a too pacey surface. Now trying to improvise, Find is the man at short fine. Sometimes it stays low, at times it kicks, it climbs, it hurries on to the batter. Danish batting with a strike rate of 100.
That's good thing. He has to improve little bit here. Chase of 187 will take a character of high caliber and class. They're gonna pinch one here. Could be tight. But he's okay. He's safe there. He's home. Bit wayward return from fielder. Direct hit needed. Would have been Danish Hilal, man in question. This is good running. And 5 gone. It's 28 for 1. You got to be fearless. And you're looking forward to chase of 187. And look at the required rate. It's still going upwards. And there is going to be steep increase with the passage of time. It's going to go upwards. To keep that scoreboard in mind, you have to maintain different things here. One is to keep wickets column in hand. You have to keep wickets intact. Carry on with cool head on your shoulders. Keep going. Look for ones, doubles. Mix it up with big shots. Temperament is needed. They need temperament of that caliber which will keep their hopes alive. They need a tenacious character. Got to be strong. Captain into the attack. First ball. And he removed Danish Hilal on his very first ball. Look at the celebration. And Danish Hilal with negligible foot movement there. He couldn't move. Either way, he's clean bowled. He draws the bullet. Stumps are shattered. Well, looks like he's in good colours today. With bat, we saw those couple of big hits. Oh, look at that one. Danish Hilal close to the bat face, trying to work it away onto the onside. Goes deep in crease. Ball stays a bit low. And there is that young lad. And he's got... he's in a tall, lanky. But he's so loving. And he's a wonderful lad. Look at that person there. He walks on to the field as a 12th man in today's game. Goodwill gesture by Sultan Warriors. That we are one. We belong to Homo sapiens. And that's a good thing. He is developing in size. But the respect for this lad, that's of next level. And hits up to you from our side. 2 for 28. Yeah, that's why. He's got a developing size. But the character is of tall stature. And he's having some words with Asim there. Asim is having some candid moments with Gulzar is the name of person, is he? Now he's going to walk off. Oh, look. Zolo is walking alongside the captain who drawn the blood, who knocked him over. Danish Hilal has no idea. As he was trying to work it up the back foot. Ball didn't rise. Still a good one. It was at a good bounce. But there wasn't too much bounce on offer. Not what he intended. He thought that this will rise and it didn't rise. Touch low beneath the bat. Timber is disturbed. 2 for 28 out of 5.1. Captain with the bat. Some of the cracking shots. He smoked that leather out of the center. Now he's got the ball in his hand. The white cherry. Very first ball. Oh, this could be tight one. Was an easy one for Azmat Rishi. It's a tricky situation out in the middle. They're 2 down and Azmat walks in. And that was a straight to one. Azmat bat and pad close together trying to block it. Oh, looks like it's going to be tricky. And there is drift and turn on offer. And looks like there is a slippery surface at the moment. As the ball is doing something here quite a bit. And Nadeem Dar is earning some moment there. He's got something to offer there. And this wicket has realized that it has a role to play. And there is some purchase for bowler. 2 for 29. That's the last to a mandatory power play. Couldn't flourish. There were expectations on Umar and Azmat. Umar is the newcomer at Azmat. He just walked in after losing the wicket of Danish Hilal. Captain and management expected that Umar and Danish will step up. But Danish has given up earlier on.
Umar works it. Talking about his caliber and class, look how he worked that one scare on the on. Whenever he feels that he can break free, he's gonna break free and he's gonna look for runs. He has that hunger, the passion for the game. He's looked sound since day one for his side. He's the only man who's shown those applications. And he knows how to adapt and adjust to the conditions here. At times there is low bounce on offer. It has been the one man. Even yesterday when ball was doing quite a bit, he stood his ground and tried to prolong his knock, batting for some 20 plus. And the one that kept low and gone on to hit the stumps. But today he has a different position here. They are in a tricky situation and in a must-win clash here. And this win will mean they're still alive in the competition, in the contest. And if they lose here, that means they're going to walk away without opening their accounts on the points table. And the positives to take away from this tournament, one is Umar, Azmat, Danish Hilal, some of the guys who are going to be the future stars in making that Fazullah. He's got the 7 wickets in the tournament. And out of 7, he has picked up Fiffer. Look, that is the shot where he was sent packing yesterday. There is a shot for stumping. And TV umpire is directed to look into this one. He's asked her to help us. And it was a wonderful reflex from wicketkeeper. He whiffed up the bails in no time. Umar, is he in trouble here? Spectrum Kings require this lad. Has he imbalanced? Is he a goner? Let's find it out. Is he in trouble? Oh, come on. Umar Zuhur is gone here. Couldn't stay his ground today. He thought something is behind the crease. There was nothing behind the crease. He's a goner. Umar gone on 3. Only batter who's shown some application and that decent approach over the past couple of days and is gone on 3. A paltry score of 3 and unable to make it to the double figures today. Falling cheaply early and it's a huge setback. It's a big wicket for Sultan Warriors. They are looking jubilant at the moment. And why not? That's a huge wicket, a massive breakthrough provided by Shubham Sharma, who draws him forward. Wasn't aware where I am. He was well outside his crease there. So Spectrum Kings Cricket Club in a spot of bother here. Tight situation. I earlier on throat it out that it's a tricky situation in the middle. Now it proved myself right once again. And whenever you are 3 down, the newcomer is going to feel that he's in a cagey situation. And they are caged at the moment as 3 of them gone back early, cheaply falling without doing something substantial. And 3 of the batters gone back to hut. Sultan is looking a different unit today. They gone down to Royals. They gone down to Atwas India 11. And stepping up, most of the batters played their part in today's game. There is a beautiful kid there. Girl child. Looking so nice, mashallah. 3 for 30, 6.1. Parents need to take care of. And she's on that portion. It is called from this end it's called the long stop area or the deep third area, and she needs to be somewhere in that stance or in the dugout where someone can take care of. 3 for 30. We are into the 7th over. The asking rate has gone up to 11.45. 4-9. They need some big shots here. Well, singles won't do it. Now, there is a double responsibility. The pressure is coupled at the moment. It's compounded. Well, there are three of the batters gone back to pavilion. The top order failed again. A miserable outing. A kind of a nightmarish outing. All 3 important batters sent packing.
Now there is another important aspect, that is to rotate strike and keep that scoreboard ticking. And nothing is going their way. They're unable to rotate strike. They're unable to keep that scoreboard okay and fine. And look, he's telling her that look at the camera. You're on screen. That one right behind it. They're having their moments, enjoying beyond the boundary cushion there. As this is 7th over in 3 for 31. Shubham Sharma. First up its kind. Tight over from this lad. Shubham again. And this time Azmat decided to take him on. He was trying to unleash that big shot there, but doesn't time it properly. Finds that mid-wicket fielder to perfection. 7 gone. It's 3 for 32. And Shubham 2 was 1 for 7. He's looked good today. Shubham Sharma. And 2 other outings where he was taken for runs. And they were nothing substantial from this lad. 7 down, 3 for 32, and they require 11.92. It's closing in on 12 and over. That isn't going to be easy. The asking rate is a big concern. Wickets column is another problem, and they need to compound their agonies. Tazim has got the ball. Faizan and Azmat need that stability. They need that resistance. Can they resist? Let's find it out. 7 समाप्त 32 पे 3. बड़ी मुश्किल स्थिति में टीम, पर एक बड़ी साझेदारी यहां से निभानी होगी. 32 पे 3 अभी तक स्कोर. 7 ओवर में 13 ओवर का खेल. 187 तक पहुंचना है और अभी भी 155 रन और बनाने हैं. इस मैच को जीतने के लिए 78 गेंदों से अजमत 1 पे. तहजीम टाक का इस्तेमाल पहली बार. पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक और सीधे गेंद स्टैंड्स में. पहली गेंद पर छक्का. स्वागत तहजीम टाक का बल्लेबाज द्वारा. हालांकि एक बेहतरीन गेंदबाज है, पर पहली गेंद पर यहां अजमत ने लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला. 6 रन अर्जित किए और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि. काफी ऊपर हवा में गई थी गेंद, दूरी भी जरूर थी. 6 रन और इस छक्के के साथ रन संख्या में वृद्धि. और कोशिश जरूर यहां पर बल्लेबाजों की कि रन गति को लगातार गतिशीलता दी जाए. सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए. 39 पे 3. 7.2 ओवर की गेंदबाजी. अजमत रेशी और फैजान मीर, ये जोड़ी समय बीच मैदान में. ताजीम टाक इस ओवर में अगली बार. फैजान मीर सामने. अच्छी गेंद थी. ऑन साइड में उसको ड्राइव किया. 1 रन के लिए दौड़ पर. दूसरी की मांग पर वापस भेजा अजमत ने कि हाँ, अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही वो 3 विकेट गंवा चुके हैं. तो यहाँ से वो कोई अतिरिक्त रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे. अजमत आउट पे. फैजान ने 2 बनाए हैं. 40 पे 3. 7.3 ओवर की गेंदबाजी. ताजीम ने अब तक 8 रन खर्चे हैं 3 गेंदों से. पहली गेंद पर वो बड़ा स्ट्रोक. नजदीकी स्लिप तैनात. पैड पे टकराई पर बाहर जा रही थी. ऐसे में कोई क्षति नहीं. रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. बलविंद्र कुमार सोनी ने इशारा किया कि लेग स्टंप को छोड़ती हुई. ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं. और सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज अजमत रेशी. 40 पे 3. 11.92 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है. और ये चीज भी जहन में रखनी होगी बल्लेबाजों को, क्योंकि 8वां ओवर इस समय चल रहा है और अभी 153 रन और 143 रन और बनाने हैं. फिर उठाया हवा में. उस ओर खिलाड़ी है नहीं. पीछा कर रहे हैं जरूर फील्डर. क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं. गेंद चली आएगी सीमा रेखा से बाहर. 4 रनों के लिए एक और चौका इस ओवर में. अरे ताजीम टाक की अगर बात करें, बेहतरीन गेंदबाज और उनके विरुद्ध इस समय प्रहार कर रहे हैं. एक मन बना लिया उनके विरुद्ध. ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर थे. खेलना कहीं और चाहते थे. गेंद कहीं और गई, पर चौका जरूर मिला यहां पर स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को. जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग सेकंड एडिशन 2025 प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल. अथवास विद कॉन्फिडेंस. 8 के बाद 44 पे 3. अजमत 12. फैजान उनके साथ 2 पे.
और पहले ओवर में 12 रन ताजिम टाक के विरुद्ध कड़े प्रहार किए। उन्हें सेट होने का अवसर नहीं दिया। एक अच्छी रणनीति बल्लेबाजों की, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एग्रेशन दिखा वहां पर, और जरूरी भी है इस विकेट पे इस टीम के विरुद्ध। शुभम शर्मा एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 2 ओवर में 7 रन 1 विकेट। किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में दिखा है। सीधे फील्डर दानिश मुजफ्फर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 186 बनाए सुल्तान ने, 187 का लक्ष्य। 9वें ओवर में 44 पे 3 विकेट, 3 गंवाए हैं। अभी भी मुदस्सिर खाना बाकी जो बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं, पर ये 2 युवा खिलाड़ी इस समय प्रयास कर रहे हैं एक साझेदारी बनाए, रन गति को थोड़ा गतिशीलता दें। सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और उसमें अभी तक सफलता भी मिली जरूर है। 45 पे 3 8.2 शुभम शर्मा, जिससे पूर्व 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। उनका तीसरा ओवर है और मात्र 8 रन दिए हैं। 2.2 में 1 विकेट भी प्राप्त किया है। हाँ, यहाँ पे संभवतः बाल बाल बचे कहना चाहिए। आजमत रेशी, शुभम शर्मा की गेंद ऑफ स्टंप की ओर आ रही थी। पड़ने के बाद थोड़ा कांटा बदला जरूर था, हल्का सा टर्न जरूर देखने को मिला, पर सुरक्षित आजमत रेशी। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 45 पे 3 8.3 के बाद 9वां ओवर। बख्शी स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान, जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड अथवा विद कॉन्फिडेंस। ये बड़ा स्ट्रोक है, ये कॉन्फिडेंस के साथ है और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का अजमत रेशी के बल्ले से। 18 उनकी व्यक्तिगत रन संख्या, और पिछले 2 ओवर से अब लगातार प्रहार कर रहे हैं। आवश्यकता भी थी यहां बल्लेबाजों को, टीम को। बेहतर स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, सही समय पे सही कनेक्शन और 6 अर्जित अपनी टीम के लिए। इस छक्के के साथ रन संख्या 50 को पार करते हुए 51 पे 3 8.4 के बाद 18 पे आजमत रेशी 13 गेंदों से। एक और सिंगल मिल जाएगा यहां पर। दिशाहीन थ्रो स्टंप्स पे लगता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता, पर 1 रन और। 8 रन अभी तक आए हैं 5 गेंदों से शुभम शर्मा की इस ओवर की अगर बात करें। 52 पे 3 8.5 के बाद अंतिम गेंद का आना बाकी इस ओवर में, पर अजमत ने एक छोड़ से प्रहार किया है और दूसरे छोड़ से उनका सहयोग करना होगा फैजान मीर को, क्योंकि फैजान भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। ये कुछ युवा अनुभवी खिलाड़ी जरूर दिखे हैं इस टीम के साथ। एक सिंगल और अंतिम गेंद पर 53 पे 3 9 के बाद। 11 ओवर का खेल, 66 गेंदें, अभी भी 144 रन और बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। क्षमा कीजिएगा, 134 रन बनाने हैं, क्योंकि 53 रन बना लिए हैं 3 विकेट पे। 187 बनाने, तो 133 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, बची हुई 66 गेंदों से। और आस्किंग रेट 12.09 तक पहुंच चुका है। आसान है नहीं, क्या यहां से कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? क्या यहां से कुछ बेहतर प्रदर्शन करते हुए सुल्तान के विरुद्ध ये पहली जीत अर्जित कर पाएंगे? देखने को क्रिकेट महान अनुशंताओं का खेल है, यहाँ पासा पलटने में देर नहीं लगती। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यहाँ सभी प्रेडिक्शन फेल हैं इस खेल में। ये क्रिकेट की खूबसूरती या महानता है इस खेल की। 53 पे 3 9 के बाद 10वें की शुरुआत, और सामने फैजान मीर। शुभम शर्मा 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। ताजिम टाक का एक बार फिर इस्तेमाल। पहला ओवर उनका थोड़ा महंगा जरूर रहा था, 12 रन उस ओवर से आए, कोई खास योगदान नहीं था। यहाँ स्टंप्स भी खेले, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट, और वो कोऑर्डिनेशन सही नहीं, वो तालमेल सही नहीं। स्ट्रोक के साथ ही काफी आगे निकल चुके थे और वापसी में काफी देर हो गई, तब तक काम तमाम हो चुका था वसीम काचरू द्वारा। यहाँ एक बार फिर स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े। लगभग आधा सफर उन्होंने तय कर लिया था, तो जब तक वापस लौटते काचरू ने स्टंप्स भी खेल दिए थे। और एक और विकेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा क्रिकेट चल रहा था, बेहतर बल्लेबाजी हो रही थी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, एक सहयोग किया था दूसरे छोर से।
पर एकाग्रता भंग हुई और विकेट मिला यहाँ पर रनआउट के रूप में सुल्तान की टीम को 66 गेंदों से 134। हालांकि ये इससे पूर्व इक्वेशन ये 65 गेंदे 134 रनों की आवश्यकता। जेके सुपर सीमेंट बिल्ड स्ट्रांग बनाए मजबूत कश्मीर। प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। एक नया भरोसा, नया एतमाद लेके आया जेके सुपर सीमेंट। रेड प्रीमियर लीग, अथवास रिटेल, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल एंड अथवास विद कॉन्फिडेंस। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब 53 पे 4 9.1 ओवर की गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट। रनआउट के रूप में मोहम्मद मुदस्सिर, जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, और इस टूर्नामेंट में अब तक के मुकाबले में गेंदबाजी बेहतर की है, बल्लेबाजी बेहतर की है, पर परिणाम उनके हित में आया नहीं है। और जीत की अगर बात करें, पिछले 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है स्पेक्ट्रम किंग्स को, या आखिरी लीग मुकाबला अपने पूल में, वो भी सुल्तान का तीसरा मुकाबला। 2 मुकाबलों में हार, पहले गुडविल से हारे, फिर अथवास इंडिया से हार का सामना करना पड़ा, और अब तीसरे मुकाबले में स्पेक्ट्रम किंग्स के सामने। और यहाँ परिस्थितियां उनके हित में, क्योंकि 53 पे 4 विकेट प्राप्त कर लिए हैं 9.1। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। 12.37 पर यहाँ लगातार अंतराल पे विकेट चटकाने होंगे। कोशिश जरूर होगी यहाँ पर सुल्तान की कि कम से कम लक्ष्य तक रोक लें, कम से कम ओवर्स में इस पारी को समाप्त कर दें, और आगे जाकर के एनएनआर जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। कोशिश जरूर होगी, क्योंकि अगला मुकाबला सुपर स्टैलियंस के साथ खेलना है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर रहने वाली है। If Spectrum Kings lose this one and they're going to be out of equation, it's going to be 4th loss straight away on the trot. That will mean Sultans can still go through, but Sultans need to win this one. If they manage to win this one, that means 4 games, 4 losses on the trot to be precise, on the bounce, a streak of losses in the tournament for Spectrum Kings. That will mean they lost all 4 on the trot. No points on the points table. Sultanas will still have 2. And if they lose the game against Super Stallions, they will go on the behalf of 2 points. It's 53 for the loss of 4. We are into the 10th over. And Spectrum Kings bringing in a young combination. Some of the experienced lads like that of Mohammad Mudassir. Yesterday we saw Ovasha, who was playing for this team. And today we saw Jaitrag. And even he was playing yesterday's game. And someone else was playing today's game. That was Jihad Magre. And another experienced lad who has played that domestic level cricket. He was here to represent Spectrum Kings, but it didn't go right way. It didn't go in their favor, and not working for Spectrum Kings. Down the leg side, gonna be a wide. Tazim Tak is operating at the moment. We saw that run out, Faizan Mir. That was the only thing needed by Spectrum Kings. They were already 3 down, and that bizarre kind of a way, losing wicket number 4. Tazim, he widened that one down the leg side. There is a slip in place. Captain is there. Mudassir comes out at number 6. He's also a former state player. He has played domestic level cricket. The first one to receive that call to become the IPL net bowler in IPL Indian Premier League. Knocked him over, cleaned him up. Beauty of a delivery. The drift was there. Trying to flick it round the corner, and is cleaned it up by Tazim Tak. That smile on his face telling the story. And Mohammad Mudassir has no idea. And take a look again. Oh, beautifully bowled. Cleaned him up. Stump shattered. Curtain is down. Smile on his face. Telling him, just go on your way. Keep going. And that brings wicket number 5 down. And with that, captain comes out to bat. He walks in at number 7. Not in a spot of bother. Hop their team back to hut. They are 133 runs behind. An uphill task. Tough ask for Spectrum Kings. This is their dugout. The smile is gone.
But they have some of the positives to walk away. Talking about that young talent, Umair, Azmat, Danish Halal. He has to work on it. The owner of club need to groom them. He has to polish that character and the talent. 54 for 5. Mohammad Munazir, the captain of side, is at number 7. Is in at number 7. Here is Tazim again with slip in place. He's got a catching cover or the Cillier cover in place now. Slip and a Cillier cover. One is called a silly mid off, but that one is called the Cillier cover. One is the shorter position. One is that we call the Cillier, and the other one we call that shorter or the short cover. Next one, he fires it in. He's a gun fielder, Umair. He picks it up and hurls that one with urgency. 10 gone, halfway stage, halfway mark. Half the job is done for Sultan Warriors. Half needs to be done. There is a long way to go for Spectrum Kings in today's game, in today's chase. The title partner, JK Super Cement. Naye Khwab, Naye Irade. Presented by Athwas Retail. Athwas with confidence. And that confidence is lacking in today's game. The experience is missing and lacking. And the confidence, all of a sudden, that's gone all of a sudden. And their drooping shoulders are telling us they are unable to fight it out here when it mattered the most. And today's match, it is of great importance for both the teams. And Spectrum could have spoiled the party for Sultans in today's game. It looks like a loop-sided affair. As it looks like a one-sided, it will be early to say one-sided, but looks like to great extent. As Sultans are holding the upper hand. Could be tight again. Not a clean stop there. Risky one taken by the two batters. It wasn't easy. Putting their wicket at stake and trying to scamper through. And they pinch a single. Asking rate is getting out of control here. It's 13.55. I think it's more than that, because score ticker is working slowly. It's taking little time to update. They're 131 behind. Now Sultans are trying to dry up singles here to put more amount of pressure, certain amount of pressure. They're trying to apply that pressure on both the batters. Kept calm again. Azmat is unable to work it either side of the man at mid-on. Should have been eyeing ones and twos here. But singles are not coming. Now he tried to launch that one. That was an invitation. And didn't go right again, but he's lucky. He gets away with that one. Gone past to the stumps. And Azmat survives. 11 overs done. 11th one comes to an end. 56 for 5. This is the second edition of Red Premier League. Day number 8. Match number 13. The two teams in the middle. Spectrum Kings lost 3 games on the bounce. Can they end that losing streak in the tournament? Or is it going to be 4-0? Well, first thing it remains to be seen, and everyone is expecting that they will make it 3-1. Now what remains to be seen is it going to be 3-1 or 4-0? It depends on their side where they will finish their campaign today. By the end of over number 20. Defensive shot as well. Test match defense from Mohammad Munazir, captain, with lot of responsibility on his shoulders. He's feeling that pressure at the moment. It's a pressure cooker like situation. 4 of them succumb to that pressure.
Another tight over from Tazim here. All is well, that end as well. A good start turnover here. In search of big shots. There was a shot and is denied. Another dot delivery. They need to compound their agonies. It's all about pressure and pressure. Batters are unable to break free. They need runs. They need ones and twos at least to reduce that deficit. This time it looked a good one. Once again it's cut off, but there is going to be overthrows before Banu can come in and stop the ball, can cut it off. He was there to cover it up. With that couple, with that brace, they need 1-9 now. Each and every single and double is important. Every run will count here. 1-8 needed. It was a try-on that occasion. Oh, one-handed gobble. What a take. Can you believe? What a catch. Spectacular one. One of the best and blinder in the follow-through. Great reflexes. Presence of mind. So quick. Agile. He stretches right hand out and upwards. Takes that. It's never easy, and look at that. Trying to dig it out. He does with those supple wrists. Then finds that safe hand on the other side. And it was just like that. For every action there is equal opposite. It was just like that reaction, and look at that. The response from bowler there. He took that blind, a one-handed gobble. Sixth one is gone. Azmat departs. Look, he plucks it in the end, and there was a little pain. He felt that it was ouch. But the ball got stuck to it. Ball stuck to his right hand there. 59 for 6 now. Just 4 wickets away, Sultan Warriors. Looks like they're inching closer to a remarkable victory, which one we call that massive, and a huge victory is on cards here. Asif Jilani, he comes out to bat at 8. Is it Sohail Rahman or Asif Jilani? I think he has put on that. And it is Sohail Rahman in at number 8. Scorer, thank you for correction. But I think his name is Asif Jilani. Well, thank you very much for letting me know that it's Sohail Rahman. Sohail Rahman in at number 8. 1-8 runs behind from 49 balls. There is a slip in place. And this could be tight again. And up goes the finger. Unable to keep that one away. And we were talking about that. He had put on that jersey, which were on his backside. It was written as Asif Jilani. And he met me a few days back here and telling me that this is the young Gru I brought here in the tournament, and talk about it. It pitched in line and then it turned a bit and caught him well in front. Good call, good decision, and Tazim has his man. One more wicket down, and he met me, had told me that you have to talk about the local talent that I brought into the tournament. I said we are here to expose that, and it's our duty. It's our prime duty to mention that what kind of combination you brought in. It's 1-8 runs behind from 48 balls. Just 8 overs remaining now. They're 7 down. They're already 7. Just 3 wickets in hand. Imtiaz is in at number 9. What can Imtiaz do? I think Imtiaz and Munazir now should try some big shots here. Try to finish somewhere close to that mark of 87. You know that you won't get there, but somehow try and reduce the deficit and walk away with one good performance here. The duo in the middle, one has to put his down and look for a big partnership here. And to me, both should put their heads down, stitch a stand and share a partnership here.
And one has to go big now. There is nothing to lose, everything to achieve. Just try and go hard. Find some runs. And there is a complete drought. It's autumn downward for batting unit. Good shot. This is what you need straight away. An aggression and signs of intent. First signs of intent from newcomer. And he walks back for the second. Good running between the wickets. 1-2-6 behind from 47. Captain has got the ball in his hand. He's into his third over. 1 for 5. Stingy. Miser. It's not going to give anything away. Batters need to find areas where they can score at will with ease. 1-5 behind. Sultan Warriors on cusp, on verge of big win here after conceding 2 defeats on the trot. They were defeated badly in game 1 and game 2, and here they needed something to boost their confidence. They needed a comeback, and looks like they're going to bounce back in today's game. And it's all 90% of the work is already done. Just 30% remains to be done, as they are holding the control of this one. They're in ascendancy, they're on top, and they're calling the shot, dictating terms right now, dealing in wickets, and picked 7 of them. 7 of the batters sent packing. 125 more runs needed. 123 more runs needed from 43 balls. And this over we have seen a couple on very first ball, then a single. And in between we saw another brace. Now a dot to end the over number. 13 overs done. Spectrum Kings, in response to 187, they are 64 for 7. Just 3 wickets in kitty, 3 in hand. What they're going to do now, to me, Imtiaz and Mohammad Munazir should look for big shots here, bigger boundaries, because there is nothing to lose. At least entertain the little attendance here at Bakshi Stadium today, this evening, and walk away with something that you're going to cheer, and that's gonna boost your confidence for games to come, because you have another tournaments lined up. And if you walk away with something positive, that will boost your confidence in coming games. And that will surely ease up things for your side and your unit. And sometimes when that confidence isn't there, you can't win big tournaments, you can't win games. That's a good shot. That's a big shot. Fearless in approach. And Tazim on the receiving end this time round. Giving respect to good balls, but this time no more Tazim. And he sends that one over long off for a mighty 6. 117 behind. Now that one, it did turn a little bit outwards. Surprised him for a while. It's back for the second. Good running. That's what you need at the moment. A 6. Then with that brace, makes it 8 of 2 balls here. 72 for 7. Got to be smart with bat here. Captain need to play spot. Captain's knock. Punched. Unable to beat his gap on offside. Can't carry it through. Zolo does mop up. The asking rate is 17.69 now. Who's going to help this side? Who's going to bail them out? They are struggling here. The struggle continues. In search of first victory. And they are already 7 down. Just 72 on the board. Now Tazim is trying to tighten the screws here. He saw where he's strong. He flighted the first one. The second one there was a drift. And now he's trying to mix it up. He's trying to follow the batter. And he's pitching it around that middle and leg. Letting the ball turn. This time underarm pull comes into play. Just a single 73 for 7.
116 behind, just 6 overs remaining, 36 balls are gonna come. The number of resources, just 3 wickets in hand. And they have 36 balls at their disposal. If they go 10 and over, they will finish around 130. They need 19 or 20 and over to prevail in today's match. They need that miracle to prevail. But that looks impossible now. But nothing is impossible. They need that courage, they need that commitment, that determination. And they need some of the big hits towering. Plenty of them. A plenty to me. They need in bundles, in pockets here. In the meantime, trying for breather in the middle. They needed a kind of breather. Imtiaz and skipper is there. Others fail to control. 7 of them gone back to pavilion. Azmat shown some commitment, resilience, perseverance for a while. But that didn't last long. He was undone by skipper of Sultan Warriors. We have one more game coming up this evening. United Imports taking on Hillview Rajouri. That's going to be a must-win game for Hillview. As United, they won their 3 games on the trot. But one thing that's going to be important, they lost the game at Pulwama early this evening. And Hillview need to keep that thing in mind. There is going to be some amount of pressure, little amount of pressure, and they can cash on. And that one, that defeat, it was little disturbing as they lost the quarter-final. And you know that when you lose the quarter-final, there is no other option. You have to pack your bags, tighten seat belts, and fly back home. It's 73 for 7. That's a huge setback for the side. And to overcome and bounce back here, Hillview can cash on. And is it going to be Hillview coming up with special performance here? And they need that. To prevail and to make things happen, they need a massive victory. They need a big win here. Can they do so? Are we in for another crackerjack this evening? Yesterday they won that super over. That was the first of its kind in the tournament. 114 away from 36 balls. Wasim has got the ball in his hand. Today he bowled 2 overs. 1 wicket for 10 runs. And Wasim today shown that he is capable. He can do wonders with the ball. That game against Royal Goodwill, that wasn't his day simply. That was off day, where he lost his line and length. But he has done well in today's match. We're just talking about that. He's trying to overcome and bounce back commentator's curse. Coming up with that hop tracker. And look at Mohammad Munazir finding that way to dispatch it and deposited that one in the stands. Oh, that is a gorgeous connection. Extension of arms. We're just talking about that. He's trying to overcome that damage. He's trying to repair the damage. He's taken on again. This lad has got the pace. But Nazir, nowadays, in today's age, you need to mix it up. Well, our 108 runs behind from 35 balls. And this is another important aspect. Because in this part of the world, here is a lot of hopelessness. And these things, at least, are working as a catalyst. And they work as a tonic. Adding a kind of fuel. And telling us that be positive. So don't worry at all. Look positive. 7 for 80. 107 behind from 34 balls. This is day 8, match number 13. The 14th one will be played this evening, and it's going to go a long way into the night. It will continue. That's aerial and Apish. Is it in the gap? It is indeed in the gap. Tanish Muzaffar does mop up. Wasn't in control on that occasion, better. But he's going to take that. This is what those who are using abusive language, who abuse each other, look what's going on. This is called the
great sportsmanship. Look, it's Wasim Kasar who's trying to tighten the shoelace. He's fixing it up at the moment. Look, this is what cricket is all about. It's all about brotherhood, equality, and helping each other. But they are abusing each other in commit section. 106 needed from 33 balls. It teaches us a lesson. Oh, now he banged it in short, and he bangs him away for another maximum. Nothing is going his way. As Wasim Bashir is taken on again, Mohammad Munazir. This is 6 number 2. And those who are watching this game, they're getting their money's worth and something to cheer. And they paid something for that. Now, Munazir has decided that this is what I have for you on offer today and this evening here at Bakshi Stadium. 100 behind. They require triple figure mark. They still require in 3 figures. It's 100 from 32 balls. 87. Now 100 exactly behind. Exactly 100 required and needed. With 3 wickets in hand. This time round, he took that pace off the ball. Now he was trying to mix it up. He tried to do that. And he was successful in doing that. It's 99 needed now into the double figures from 31 balls. Wasim 2.5. 1 for 25. One last time in his third over. Tazim is having a word once again with Wasim. Going with that short of length. That was punished twice. And he was trying to go with that short pitch bouncer. But that didn't rise too much. 99 away. Oh, he's knocked him over. That is a Yorker length delivery. This time he uprooted that stump there and gone for a walk. And with that, 15th over is done. It's 88 for 8. Interesting figures. 8-8. And on the other side of hyphen, it's 8. Take a look again. Oh, beautifully bowled. Cramped him for space. Shown him way to pavilion, and it means Imtiaz is a gunner. He's going to go back to pavilion. Take a look again. Uprooting the leg pole. And Wasim finally has his man. He has his man. It's the second one overall. And this over after being belted for 2 sixes, conceding 2 magnanimous hits, he learned the lesson and removed that Imtiaz Ahmed. The title sponsor of Red Premier League this season is JK Super Cement, Naye Khab, Naye Irade, presented by Athwas Retail, Athwas with confidence. 99 away from 30 balls. We have one more coming up this evening. Stay tuned, stay connected. And right now, just 2 wickets away. Team Sultan Warriors. That means they are still alive in the competition. And this victory will mean they will have something to cheer about. And they are going to stay alive in the competition. थैंक यू मनवर. 30 से 99 ये आंकड़ा है, ये इक्वेशन है, पर विकेट 2 ही सुरक्षित हैं. वसीम बशीर इस पिछले ओवर में कासे खर्चीले साबित हुए, पर विकेट ज़रूर मिला. मोहम्मद मुनज़्ज़िर 30 पे 19 गेंदों से, और उनके साथ जाहिद दिराग नए बल्लेबाज आए हैं. 30 गेंदें 99 चाहिए. और शुभम शर्मा 3 ओवर 16 रन 1 विकेट गेंदबाजी विश्लेषण. दूसरे स्पेल में आखिरी ओवर अपने कोटे का लेकर के तैयार. 99 की आवश्यकता, 30 गेंदों का आना बाकी, और पहली गेंद लेकर के शुभम शर्मा. इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने गए जरूर थे. सामने की ओर अंदरूनी भाग लगा और गेंदबाज की ओर चली गई गेंद. फील्ड कर लिया वहां पर शुभम ने बगैर किसी रन के. 29 से 99. मोहम्मद मुनज़्ज़िर ने आज 30 रनों की जो पारी खेली है 20 गेंदों से, वो कमाल की पारी है. कुछ बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं. इस बार एक और अच्छी गेंद थी, विद टर्न जरूर खेले. ऑफ साइड में गेंद को फील्ड किया गया वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास समय था सिंगल लेने का. एक और खाते में 28 से 98. 89 पे 8.
15.2। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब। ये उनका इस लीग में आखिरी मुकाबला है। इस लीग की अगर हम बात करें, ये आखिरी लीग मुकाबला उनका अपने पूल में। वहीं पे सुल्तान का तीसरा मुकाबला डॉट के साथ संतुष्ट रहेंगे। 3 गेंदों से 1 रन आया है। 98 चाहिए 27 गेंदों से स्पेक्ट्रम किंग्स को। जाहिद तराग सामने, गेंदबाजी शुभम शर्मा के पास। शुभम तराग के लिए इस बार फिर नीचे रहती है गेंद। सामने सीधे बल्ले से खेला जरूर जब तक गेंद को फीड किया जाता। शॉर्ट कवर से बगैर किसी रन के, रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। अच्छा क्रिकेट खेले हैं, युवाओं को अवसर मिला है स्पेक्ट्रम में और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा इस टूर्नामेंट में अब तक के मुकाबलों में। हाँ, अलग बात है कि वो मुकाबला जीत नहीं पाए, पर प्रदर्शन उनका रहा। वो कला दिखी, वो क्षमता दिखी, वो टैलेंट दिखा, वो प्रतिभाशाली क्रिकेटर्स का योगदान दिखा इस टूर्नामेंट के इन मुकाबलों में स्पेक्ट्रम किंग्स की ओर से। 97 की आवश्यकता 25 गेंदों से। 90 पे 8, 187 बनाने। अभी भी आधे से ज्यादा सफर और तय करना है जहां तक रन गति को बनाने का सवाल है। रिक्वायर्ड 23.28, काफी ऊपर। यहां से अब जीतना आसान है नहीं। मैं समझता हूं ये आखिरी औपचारिकताएं अब बची हैं इस मैच में। ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली, उस गेंद तक पहुंचने का प्रयास था। हालांकि बिल्कुल भी फुटवर्क का इस्तेमाल वहां हुआ नहीं बल्लेबाज का। ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर की समाप्ति 16 समाप्त। 90 पे 8, 24 गेंदों से 97 चाहिए मैच जीतने के लिए स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को। चौबीस से 97। मोहम्मद मुनज़्ज़िर 31-22 गेंदों से और जाहिद तराग ने 1 रन बनाया है। 3 गेंद का सामना किया उन्होंने, 3 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। इसके बाद एक और मुकाबला, यूनाइटेड इंपोर्ट्स का मुकाबला हिलवीव राजौरी के साथ। और वहाँ हिलवीव राजौरी का वो आखिरी मुकाबला होगा। इससे पूर्व उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं और 2 में हार का सामना, 1 जीत अर्जित की है। ग्लोबल डरू टाइटंस के वो मुकाबला जीता था, 190 चेज किए थे। आज उनका आखिरी मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साथ, और यूनाइटेड इंपोर्ट का भी अपने पूल में आखिरी लीग मुकाबला होगा क्योंकि 3 मुकाबले और तीनों में जीत अर्जित किए। 6 अंक पूल बी से वो सर्वश्रेष्ठ है। पूल ए से रॉयल गुडविल क्लब ने 3 मुकाबले खेले और तीनों में जीत अर्जित की है। और वहीं पे सुल्तान की बात करें, हालांकि पूल ए में अब तक 2 मुकाबले खेले उन्होंने, दोनों में हार का सामना, ये तीसरा मुकाबला। स्पेक्ट्रम किंग्स ने 3 मुकाबले खेले हैं पूल ए से, तीनों में हार का सामना, ये उनका आखिरी मुकाबला है पूल में। सोपोर स्टैलियंस ने 1 मुकाबला खेला, वहां जीत अर्जित की। अथवास इंडिया 11 ने 3 मुकाबले खेले और 3 मुकाबलों में 2 जीत और 1 हार। 1 मुकाबला उनका भी शेष है इस पर पूल से। बोल्ड कर दिया यहां पर नए ओवर की शुरुआत। वसीम बशीर की पहली गेंद पर जाहिद तराग बोल्ड हुए और 4 गेंदों से 1 रन बनाया। 90 पे 9वां विकेट गंवाया स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब ने। वसीम बशीर को मिलने वाली एक और सफलता, अच्छी खासी गति थी उनके पास, उस गति का बेहतर इस्तेमाल किया और नीचे रही गेंद लेग स्टंप की शेद में पड़ने के बाद सीधी स्टंप पे जा टकराई और विकेट वहां पर मिलता हुआ वसीम बशीर को। विकेट मिलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। ओ कमाल की गेंद थी, बिल्कुल भी वहां उछाल नहीं था गेंद में, और पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रहती हुई स्टंप्स पे। 23 गेंदों से 97, आखिरी औपचारिकताएं, आखिरी जोड़ी 16.1, 90 पे 9। मोहम्मद मुनज़्ज़िर 31 पे और फैजुल्ला डार होंगे अब आखिरी बल्लेबाज। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब, ये 13वां मुकाबला जेके सुपर सीमेंट रेड प्रीमियर लीग। नए ख्वाब, नए इरादे, प्रेजेंटेड बाय अथवास रिटेल, अथवास विद कॉन्फिडेंस। जेके सुपर सीमेंट के साथ बनाए एक नया मजबूत कश्मीर। खूबसूरत और शानदार प्रतियोगिता रेड प्रीमियर लीग
JK Super Cement Red Premier League presented by Athwas Retail Athwas with confidence. पर आज कॉन्फिडेंस की कमी दिखी टीम स्पेक्ट्रम में। 90 पे 9 गवाए हैं। 16.1 में 97 चाहिए 23 गेंदों से। आखिरी जोड़ी फैजुल्ला डार आए ने बल्लेबाज। मोहम्मद मुनज़्ज़र 31 पे 22 गेंदों का सामना किया है। संतानवे चाहिए 23 गेंदों से। 90 पे 9 16.1 ओवर की गेंदबाजी। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में और आखिरी औपचारिकताएं बची हैं इस मैच में। स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब के लिए एक और मुकाबला लेकर के आप तक पहुंचेंगे। मुकाबला यूनाइटेड इंपोर्ट्स बनाम हिल व्यू राजौरी। एक और बेहतरीन मुकाबला आज की शाम आप सभी श्रोताओं के नाम, व्यूअर्स के नाम। 23 गेंदों से 97। वसीम बशीर पहली गेंद पर विकेट। 3.1 ओवर 25 रन 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आज उनकी रही है। 97 की आवश्यकता हो, अतिरिक्त तो छाल थी पढ़ने के बाद। फैजुल्ला डार बाएं हाथ के बल्लेबाज, युवा खिलाड़ी हैं पर एक बेहतरीन गेंदबाज है और कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। बल्ला घुमाया ज़रूर था पर संपर्क नहीं हुआ। हल्की सी मुस्कान चेहरे पे अपने साथी खिलाड़ी मुनज़्ज़र के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ बातचीत उनसे ज़रूर की कि थोड़ा आत्मविश्वास रखिए, संयम के साथ भरोसा रखिए। पूरे 20 ओवर हम खेल सकते हैं, क्या यहां से पूरे 20 ओवर खेल पाएंगे देखना होगा। एक सिंगल मिल जाएगा यहां पे। 1 रन और खाते में। 91 पे 9 16.2। 23 अथवा 22 गेंदें बची हैं। 97 रनों की आवश्यकता इस मैच को अपने नाम करने के लिए। इक्यानवे 9 विकेट पे आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। मोहम्मद मुनज़्ज़र 31 पे 22 गेंदों से। वसीम बशीर का यह आखिरी ओवर है। 26 रन 3 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ स्टेडियम, खूबसूरत समा, खूबसूरत वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल। ये दूसरी बार अंतिम चरण की ओर। इस बार अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ की नीचे रहती, मिडिल स्टंप पे आ रही थी। सम्मान दिया सीधे बल्ले से, गेंद को फील्ड कर लिया गया वहां पर बगैर किसी रन के। 91 पे 9 16.3। 21 गेंदें 96 रनों की आवश्यकता स्पेक्ट्रम किंग्स क्रिकेट क्लब को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, पर वो अब संभव नहीं है। 91 पे 9 आखिरी छोड़ी। वसीम बशीर और अच्छी गेंद पर रन नहीं मिलेगा। स्ट्रोक तो जरूर था पर सीधे फील्डर के पास। एक और डॉट गेंद। पहली गेंद पर विकेट, फिर सिंगल, फिर 2 डॉट गेंदें, तो 1 रन मात्रा है 4 गेंदों से इस ओवर में। 20 गेंदों से 96 रन। यह है इक्वेशन इस मैच में। 91 पे 9 मोहम्मद मुनज़्ज़र 31 पे 24 गेंदों से। फैजुल्ला डार 1 पे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं। वसीम बशीर अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 4 ओवर का जो एक सीमित रहता है कोटा गेंदबाज का T20 में। बड़ा स्ट्रोक है और सीधे एक टिप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए अंततः स्ट्रोक की तलाश में थे मोहम्मद मुनज़्ज़र। वो स्ट्रोक मिलता हुआ आत्मविश्वास बढ़ेगा इस बल्लेबाज का। खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक, बढ़िया शॉट, चौका मिलता हुआ 4 और खाते में। और 4 रनों के साथ रन संख्या पहुंच गई है 91 से बढ़कर 95 पे। ओवर की समाप्ति इस चौके से ही। 18 गेंदों से 92 चाहिए। 95 पे 9 17 समाप्त। 3 ओवर में 92 आखिरी औपचारिकताएं। The 92 behind from 3 overs. 92 is an easy one. It's a big figure and it's almost impossible now.
95 for 9. Wasim conceding the boundary of the final ball, wasn't happy at all. He thought there is a minute long on. Wasn't anyone patrolling. Behind 30 odd. Fazullah is on strike. Top notch with ball. He's on strike. Likewise, yesterday he was being cornered and he's again being cornered by some of the players, this time around by Sultan Warriors. All smiles. His smiling face is looking so nice, trying to cut it, and is beaten on that occasion. It stays touch low again. Just formalities remaining. 92 needed from 16. Solid block. Jammered that one. The 92 behind. 3 dots. Tazim having a word. Now there is width on offer. He gets it through. Just a single. That brings Mohammad Munazir on strike. He's batting on 34-26. And today he's shown that application. You got to be gutsy. That braveness shown by the captain Mohammad Munazir in today's game. Rock back. Quality shot in the gap for 4. One bounce into the fence. Nice adjustment again. His eyes lit up. Oh, well controlled. Good shot and yielded a boundary. It's 100 up for Spectrum Kings. It's 1-1 now. Soon after that boundary, he's looked for one. He will keep the strike. Captain Nadeem Dar finished his quota of 4 overs, 1 for 14. Another good spell comes to an end. One we saw from Fazullah Dar. That was so nice and economic. Oh, sorry, I was talking about that Tazim talk. Sorry, Tazim bowled that spell, and Fazullah bowled in first innings. That good spell, and Tazim finished his quota. Wasim is already done with his quota. Is it going to Shubham Sharma to operate now? Looks like. It looks like that Shubham has got ball in his hand. Or Said Salman will operate. Which one will be given the ball? As Sharma hands over the ball to Salman. It looks like that Sultans want to finish this game. They want to wrap it up. And already into the 19th over now. They have 1 wicket in kitty. Salman. He can bat, he can bowl. He's a handy all-rounder. More potent with ball. He's got that potential, ability and class. 86 need from 12. First ball hit hard in the gap. Will he get to the ball? Oh, he does well. He cuts it off, Tazim there. He does well. Saver 2 runs. Good stop in the deep. Was an easy one to stop. But he does very well to stop the ball at wide-ish mid-on area. It was travelling at a good pace. Mohammad Munazir into the 40s. 8 away from his 50 here. 84 to get from 11 balls. 2 overs. Mission impossible. But one thing is pretty on. That means he's 50. He's just 8 runs away. At least should try to get there. That's going to be an individual achievement. And should walk away with 50 score here. He's got 10 balls. And he's 8 runs away. Plenty to score. 8 needed by Munazir. He's not going to run here. He's not going to pinch a single. He wants to keep the strike. I think he's going to hit hard. One thing he will try to keep strike. And the second thing he will try to get to his 50. There was extra bounce. There was awkward bounce of the surface. Zolo and Asim Bashir. Cracking jokes. Funny moments. That one. Swill on its axis. That one is going to roll past the wicket keeper. White signaled. He's not going to run.
I think he's going to keep Faisal on the other end. He want to take that charge. He want to keep that strike. He's going to keep the strike for the next one again. And look, this one, that was a good hold. That was a clean stop from Zolo. 83 and 8 from 9. Oh, that is supreme touch. Gorgeous shot. And takes him to 46. Superb timing. Wonderful shot. Through the offside. Into the extra cover boundary. Oh, look at that shot. On top of that one. And just admired that one. With full flow. On to 46. Just 4 needed. Change of pace. Will he be caught? Oh. Has he taken that? We'll have to wait and watch. Soft signal is going to be out, but are they going to ask the TV umpire to look into this one? And he's asked to stay there. I think Ravi Kumar Chaurasia will ask the TV umpire to look into this one. Has he touched the ground? Did he imbalance a bit? Only the time will tell us. It was Captain Nadeem Dar there. Was it a clean catch? Ravi Kumar is having a word with Sultan Warriors skipper there. And they're going to check it. They're going to check it. Yes. The TV umpire is trying to go through this one again. They have the different angles available on their screen right now. The TV umpire, he's got different monitors in front. He's going to look at it from different angles. If it is a clean catch, then we're going to call it absolute blinder and one of the best this evening. 79 needed from 8. Is it a clean catch? Is he okay there? Is it a fine catch? TV umpire is taking time. Take a look again. Take a look. Oh, looks okay. Looks fine to me from this angle. Nazir, what do you think? What do you make of it? Look. It looks like that. Oh, wow. Flying bird in air. And I don't think there is any deviation. That's a good catch. And the signal is out. Blinded by captain. And today he looked totally different. With bat, with ball now in the field. So that's it. The story from the Sunday. It's Sultan Warriors. They prevail against the likes of Spectrum Kings Cricket Club and Munazir, the captain, gone on 46. Can't get his 50 here. Unable to get to his 50. Oh, look at that catch. Amazing skills. Nice balance. Wonderful global. And there was the fielder's call that I took it. It was my hard work which paid off in the end there. Just inches inside, or an inch inside, we can say that. Oh, good balance. Wonderful global. Oh, so they prevail by 78. So that's it we have for you from this one. And Sultan has finally opened their account on the points table. We shall be back with match number 2 for today and overall game number 14. Till then, Assalamu alaikum and fi amanillah.